I welcome all the ज्वेलरी इंडस्ट्री मेंबर्स एंड मेंबर्स ऑफ जीजेसी, जितने हमारे ज्वेलर्स भाई हैं, सबका मैं स्वागत करता हूं ये लाभम के सेशन के लिए। एंड एज वी ऑल नो कि आज का लाभम का सेशन क्यों इतना इंटरेस्टिंग है। उसमें इंटरेस्ट की बात सबसे बड़ी ये है कि हम लोग एक कोविड वीडियो कॉल किया है। आवाज आ रही है क्या सुनील जी? आप कैन यू हियर? कैन एवरीवन हियर? या ओके फाइन। सो नाउ द थिंग इज कि आज हम कोविड 2 की एक लहर से पास हो रहे हैं और ये हमारे लिए वही सिचुएशन आ गई है कि हमारे लिए बिजनेस का ये क्राइसिस मोमेंट है। अभी जहां से मतलब जितने भी हमने अपने पूरे, जैसे हमारे शिवराम जी भी गुरु हैं, इस तरह हमने जो अपने गुरुओं से जो अपने बिजनेस में सीखा है कि एट नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आज ये क्राइसिस से बाहर निकलना हमारी नेसेसिटी हो गई है। अभी इसके लिए हमको क्या सोचना है, उसके लिए हमको क्या इनपुट देना है। इसीलिए हमारे पास एक बहुत एनलाइटेंड मार्केटिंग बिजनेस गुरु है शिवराम जी। एंड और ज्यादा अभी मैं इसमें पहले इसको हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं चेयरमैन सर को वेलकम करता हूं। वो अपना एक इंट्रोडक्शन दे देंगे कि हम लोग किस तरीके से लाभम में भी आगे बढ़ रहे हैं और सर का क्या व्यू है। आशीष जी आप लाइन पे हैं? यस सर। या आशीष जी, गुड आफ्टरनून, प्लीज टेक ऑन। गुड आफ्टरनून सबको। और फर्स्टली थैंक यू सो मच फॉर joining in this 77th, correct me if I'm wrong, 77th लाभम। और संजय भाई और साहिल भाई दोनों इसको बहुत अच्छी तरह से आगे लेके जा रहे हैं। और आई थिंक all the participants are quite aware of what GJC is। हमारा मोटो है प्रोटेक्ट, प्रमोट एंड प्रोग्रेस। तो उसी राह पर हम लोग चल रहे हैं और इसमें जो हम लोग लाभम करते हैं इसमें हम आपको कंप्लायंस और नई नई चीज़ों के बारे में बताते हो। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप शिवराम जी से जितना मैक्सिमम से उनसे ज्ञान ले ले। he has been our guru also in our company. Namaste Shivaram ji, and I welcome you all once again, and over to you Sahil bhai. Thank you. थैंक यू आशीष जी। एंड वी रियली नो कि आप कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं। पूरी इंडस्ट्री के जो नए नए इश्यूज क्रॉप अप हो रहे हैं, आप उसके लिए रिलेंटलेसली वर्क कर रहे हैं। वी थैंक यू फॉर योर साहिल भाई, मैं सबको ये वापस इनवाइट करना चाहता हूँ। कल जो हमारा हॉलमार्किंग के लिए ऑल इंडिया जेम ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल ने एक इंडस्ट्री मीट रखी है, जिसमें पूरे देश भर से डेलीगेट्स ज्वाइन होने वाले हैं। एक अच्छा खासा एक मीटिंग होगा जिसमें डिस्कशन होगा कि आज की तारीख में जो मैंडेटरी हॉलमार्किंग का जो ऑर्डर बना हुआ है उसमें क्या क्या तकलीफें आ सकती है, किस तरह से हम इसका आगे चल सकते हैं और क्या क्या खामियां हैं। और आपके जो भी प्रश्न होंगे, आपकी जो भी तकलीफें होगी, वो अगर आप हमें पहले से इन्फॉर्म कर देंगे तो हम वो उस मीटिंग में भी उसका निराकरण करने का कोशिश करें। थैंक यू। कल दोपहर को 2:30 बजे। थैंक यू जी। मैं सबसे अनुग्रह करता हूँ कि सब कल की मीटिंग ज्वाइन करें प्लीज, लार्ज नंबर्स में। नाउ आई वुड वांट वाइस चेयरमैन मिस्टर सय्यम मेहरा टू से फ्यू वर्ड्स। सय्यम मेहरा। यस थैंक यू साहिल भाई, थैंक यू आशीष भाई। आपने हाय शिवराम जी, हाउ आर यू? गुड गुड गुड। चलो हमने अभी जैसे आशीष भाई ने बताया हॉलमार्किंग के बारे में, 7 दिन से आज हॉलमार्किंग के बारे में, और काफी महीनों से और काफी सालों से हम लोग ये परिश्रम कर रहे हैं कि एक राइट डायरेक्शन हॉलमार्किंग को मिले। 1 साल डिले ही करना हमारा टारगेट नहीं है, लेकिन एक राइट डायरेक्शन गवर्नमेंट ले ले हॉलमार्किंग को लेके। जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको लेके कुछ महीने पहले आशीष भाई के साथ मैं, आशीष भाई, नितिन भाई, डीडी करेल जी, हम लोग गए थे ब्यूरोक्रेट्स को मिलने दिल्ली में। उधर उनसे बात हुई, उधर उनसे बात करके हमारा ये निष्कर्ष निकला कि उन्होंने हमें आश्वासन दिया था उस टाइम पर कि हॉलमार्किंग को डिले करेंगे, आगे लेके जाएंगे, लेकिन कुछ कारणोंवश वो अड़े हुए हैं और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी हॉलमार्किंग का अभी तक रेडी नहीं है। फिर भी हॉलमार्किंग एक हैपहैजर्ड वे के अंदर लेकर आने की कोशिश है। तो इसके ऊपर आने वाली जो लड़ाई है हमारे सब मैन्युफैक्चरर, रिटेलर्स, होलसेलर्स की, वो काफी लंबी हो सकती है। सबको रेडी रहना है और रेडी रह के
कुछ एक ऐसा माहौल बना के रखना है, क्योंकि ये सिर्फ यही यहाँ तक नहीं है, आगे आने वाले 3 साल अगर ये हैप्पैज़र्ड वे में आ जाता है तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएंगे। अभी मैं हम दो इवेंट्स कर रहे हैं, तीन मतलब एक एग्जीबिशंस कर रहे हैं। कुछ कारण से पीएमआई ये बार नहीं हो पाया लॉकडाउन की वजह से। 2 पीएमआई जो हमारे हुए हैं उनमें बहुत अच्छा हमें रिजल्ट मिला था। 2.5 टन के ऊपर ऑर्डर्स मिले थे हमारे जितने मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको। और जीजेएस भी आने वाले जून एंड के अंदर है। हम कोशिश करेंगे मई स्टार्ट से 18 इयर्स एंड अबव के को सब लोगों को वैक्सीनेशन अलाउड हो गई है। और उसके बाद हम ट्राई करेंगे कि ये शो हो जाए। हमारा एक लेवल ट्राई बेस्ट रहेगा। आभूषणम भी जो मदन भाई के अंडर है प्रोग्राम है, जिसके कन्वेनर मदन भाई हैं। हम ये प्रोग्राम कुछ दिन पहले करने वाले थे, लेकिन अभी एक अलग फॉर्मेट से आभूषणम आगे आएगा, जो हम रूम में करेंगे, होटल के रूम्स में करेंगे। जिससे जो गवर्नमेंट की नॉर्म्स है 4 आदमी 8 आदमी, वो भी बराबर तरीके से पूरी हो जाएगी। ये आने वाले साल के अंदर हम 3 से 4 आभूषणम अलग फॉर्मेट से करेंगे, जिससे हमारे जो एट प्रेजेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो कारीगर हैं, उनको भी काम मिले। तो एक बहुत एक्सीलेंट सोच से संजय भाई और साहिल भाई ने ये लाभम आगे लेकर जा रहे हैं, जिसके अंदर ये क्राइसिस के आगे हमें क्या सोच के चलना चाहिए और कैसे अपने आप को तैयार करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट सोच है। हो भी सकता है कि आने वाले दिनों में काफी टाइम हमें ऐसा मिले जो रिटेल शोरूम्स बंद हैं, हमें अपने आप को खुद को ऑर्गेनाइज करना होगा, खुद के ऑर्डर सेक्शंस, खुद के स्टॉक्स को, खुद के पूरे डिपार्टमेंट, अलग अलग ऑफिस के डिपार्टमेंट्स को ऑर्गेनाइज करना होगा। ये टाइम हमें वापस मिल रहा है 8 महीने बाद, तो इसे बराबर उपयोग किया जाए इस टाइम का। हम शिवरामन जी को कहेंगे, वो उनका ज्यादा टाइम मैं लूंगा नहीं, आगे बढ़े और आगे बढ़कर सबको एक ऐसी अच्छी दिशा दिखाएं, जिससे आगे आने वाले 2-3 महीने जो भी हमें मिल सकते हैं कुछ घंटे फ्री दिन के अंदर, उनका राइट उपयोग किया जाए। थैंक यू। थैंक यू सेम भाई। एंड अभी बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए वील मूव ऑन टू अमरपाल जी फ्रॉम एमसीएक्स। वो अपना एक रिस्क मैनेजमेंट इन एमसीएक्स गोल्ड एंड सिल्वर डेरिवेटिव्स वो अपना प्रेजेंटेशन देंगे। यू कैन स्टार्ट अमरपाल जी। Am I audible, Sahil ji? Yes, you are audible. Yeah. हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि MCX में 7 ईयर हाई बुलियन का टर्नओवर हुआ है अराउंड 50,000 करोड़ के आसपास। 50,000 करोड़ के आसपास अराउंड जुलाई में बुलियन का टर्नओवर हुआ है, विच इज ए 7 ईयर हाई। सिमिलरली फ्रेंड्स, ऑप्शंस में हमारा ऑल टाइम हाई हुआ है मार्च में, दैट इज 8.75 टन्स ओआई है। सिमिलरली सिल्वर की ओआई है हमारी 172.2 मेट्रिक टन्स, और सिल्वर की जो टर्नओवर है 741 सीआर, वॉल्यूम में 111 मेट्रिक टन, ऑल एट लाइफ टाइम हाई इन अगस्त 2020। सिमिलरली सिल्वर में जो डिलीवरी हुई है अराउंड सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में अराउंड इट इज अबव 140 टन्स के आसपास। एंड सिमिलरली दिसंबर और मार्च में जो डिलीवरी हुई है बैक टू बैक अबव 100 टन्स हुई है सिल्वर में। एंड सिमिलरली फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं MCX में देर आर 4 types of contracts in gold, where we have gold petal 1 gram contract, जिसमें lot size of 1 gram, similarly 1 रुपए 1 रुपए पे 1 रुपए की हार्जित है। सिमिलरली गोल्ड गिन्नी जो 100 ग्राम गोल्ड गिन्नी जो 8 ग्राम कॉन्ट्रैक्ट है, उसका जो स्क्रीन पे भाव है 8 ग्राम का है, लॉट साइज 8 ग्राम की, 1 रुपए 1 रुपए हार्जित। और जो ज्वेलर्स के काम का है 2 कॉन्ट्रैक्ट जो कि है 100 ग्राम का और 1 kg कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पे प्राइस कोटेशन 10 ग्राम की है, लॉट साइज 100 ग्राम का है, 1 रुपए पे 10 रुपए हार्जित है। सिमिलरली गोल्ड के ऊपर 1 रुपए पे 100 रुपए हार्जित है। मीन्स 45,000 से 45,001 जाएगा तो मिनी में 10 रुपया मिलता है, और 100 मिनी में 100 ग्राम में 10 रुपया मिलता है, और किलो में आपको 100 रुपया मिलता है। सिमिलरली सिल्वर में देर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तीनों का प्राइस कोटेशन है किलो का। जैसा कि मान लीजिए 65,000 प्राइस चल रहा है, सो 1 रुपए पे आपका 1 किलो में 1 रुपए की हार्जित है। सिमिलरली आपका जो 5 किलो का कॉन्ट्रैक्ट है, उसका 1 रुपए पे 5 रुपए का हार्जित है, और 30 kg का कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें 1 रुपए पे 30 रुपए की हार्जित है।
और हम मार्जिन की बात करें, सो मार्जिन जो हमें लग रही है अराउंड 6% मार्जिन लग रही है गोल्ड के केस में, और अराउंड 10% मार्जिन लग रही है सिल्वर के केस में, और सिमिलरली प्लस ELM प्लस एडिशनल वॉलेटिलिटी मार्जिन लगती है, प्लस ऊपर से अराउंड मार्क टू मार्केट लगता है। तो अगर गोल्ड किलो की बात करें हम लोग, अगर 45,000 का भाव पकड़े तो 3.25 लाख रुपए आपको ले बेच करने के लिए गोल्ड में MCX में फ्यूचर्स में आपको मार्जिन लगती है, प्लस मार्क टू मार्केट। सिमिलरली गोल्ड 100 ग्राम में 32,500 रुपये आपको देना पड़ता है। सिमिलरली सिल्वर 30 kg में अगर मैं 65,000 का प्राइस पकड़ता हूं तो 2.25 लाख रुपए आपका मार्जिन मनी ब्लॉक होता है, और सिल्वर 5 kg में 37,500 और सिल्वर 1 kg में अराउंड 7,500 के आसपास आपका पैसा ब्लॉक होता है। और दोस्तों व्हाट इज हेजिंग? हेजिंग क्या है? हेजिंग का मतलब ये है कि आप आपकी जो इन्वेंट्री होती है उसको हेज करते हो बाय सेलिंग एट MCX, एंड सिमिलरली आपकी इन्वेंट्री डिप्लीट हो जाती है, सो उसको आपको बाय करना है तो MCX आप बाय करते हो, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ हेजिंग। सिमिलरली दोस्तों आपके शॉप में कस्टमर आता है, वो बोलता है 45,000 में मुझे आप 45,000 में भाव फिक्स कर लीजिए और 20 दिन बाद मैं आके ज्वेलरी देके जाऊंगा, ये लीजिए 5 लाख रुपया टोकन मनी। तो आपके पास दो ऑप्शन है, आपको पता है 20 दिन तो लगते नहीं है ज्वेलरी बनाने के लिए, 10 दिन में 7 से 10 दिन में ज्वेलरी बन जाती है। तो आप क्या करोगे? आपको 1 kg का बार सोने का बार खरीदने की जगह पे MCX फ्यूचर्स बाय करोगे। अब ये एग्जांपल में MCX फ्यूचर जो है 200 रुपया नीचे है स्पॉट भाव से। सो आपने क्या किया, 45,000 के भाव में आपने 1 kg का बार लेने की जगह पे आपने MCX का फ्यूचर्स बाय कर लिया। अब दो सिनेरियो हो सकते हैं, या तो भाव ऊपर जाएगा या तो भाव नीचे जाएगा। सो फर्स्ट सिनेरियो, भाव नीचे चला गया, आपने MCX खरीदा है 44,800 में, जब स्पॉट चला था 45,000, आपने स्पॉट में नहीं खरीदा 1 kg का बार, आपने MCX खरीदा और भाव हो गया 44,400, तो आपको MCX पे 400 रुपये नुकसान हुआ। आपने 45,000 में 1 kg बार नहीं खरीदा, अब भाव हो गया 44,600, तो आपको 400 रुपया मुनाफा हुआ आपको 1 kg बार पे। सो 400 रुपये MCX पे नुकसान, 400 रुपया फायदा, भाव नीचे के सिनेरियो। अब दूसरा सिनेरियो, भाव ऊपर चला गया। दो ही सिनेरियो होंगे, या तो भाव ऊपर जाएगा या तो भाव नीचे जाएगा। तो दूसरा सिनेरियो, भाव ऊपर चला गया, आपने 45,000 में स्पॉट में 1 kg बार नहीं खरीदा, आपने उसकी जगह पे MCX में खरीदा। क्यों नहीं खरीदा? क्योंकि मुझे पता है 10 दिन बाद मुझे 1 kg बार देना है मेल्ट करके ज्वेलरी बनाने में, तो मेरा 10 दिन का ब्याज बच जाएगा, उसकी जगह पे मैं फ्यूचर्स में 3.25 लाख रुपया देके मैं फ्यूचर्स खरीद लूंगा। सो उसमें आपने MCX खरीदा 44,800 में, भाव हो गया 44,200, MCX में 400 रुपया फायदा। अब आपने 45,000 में खरीदना था, उसकी जगह पे भाव हो गया 10 दिन बाद 45,400, आपको हाजिर में नुकसान हुआ 400, तो आपका नेट इफेक्ट 0। सो दिस इज द वे आपको हेजिंग करना है, प्योर वेनिला हेजिंग गोल्ड के फ्यूचर्स के साथ। दूसरा आप जो मेन आप जो देख सकते हैं कि नए नए इनोवेशन ज्वेलर्स लाते हैं। नए नए इनोवेशंस में ज्वेलर्स बोलते हैं कि इसको फ्लेक्सिबल प्राइसिंग स्कीम बोलते हैं। आज मान लीजिए गोल्ड का भाव चल रहा है 45,000, कस्टमर आता है 5 लाख रुपया देता है, भैया मैं 1 किलो की ज्वेलरी खरीदूंगा, 20 दिन बाद आके मैं आपका ज्वेलरी ले जाऊंगा, लेकिन मुझे 20 दिन बाद जो भी लोवेस्ट प्राइस रहेगा वो मुझे चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे 45,000 मेरा प्राइस है आज का, 20 दिन बाद भाव हो गया 46,000, तो आप मुझे 45,000 के भाव में ज्वेलरी दोगे। आज 45,000 भाव चल रहा है, 20 दिन बाद भाव हो गया 44,000, तो आप मुझे 44,000 के भाव में आप ज्वेलरी दोगे। क्या ऐसा पॉसिबल है? ये फ्लेक्सिबल प्राइसिंग स्कीम देना पॉसिबल है? जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। MCX के पुट ऑप्शन के चलते MCX का पुट ऑप्शन आप यूज कर सकते हो। एग्जांपल पे आप देख सकते हो, मान लीजिए करंट मार्केट प्राइस 45,000 चल रहा है 10 ग्राम का, आपने तुरंत सामने पुट बाय कर लिया 45,000 के स्ट्राइक पे, और कितना प्रीमियम दिया आपने? अराउंड 450 रुपया, माने अप्रोक्सीमेटली 1% प्रीमियम। ज्वेलर की मार्जिन होती है 15 से 18%। अगर उसको फ्लेक्सिबल प्राइसिंग स्कीम ऑफर करना है तो वो 1.5 से 2% MCX में प्रीमियम देके अपना कवर कर सकता है, क्योंकि इसकी मार्जिन होती है 15 से 18% के बीच में। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने पुट खरीदा 45,000 के भाव में, 450 रुपीज में पुट खरीदा, दिवाली पे भाव हो गया 46,000, तो मैंने प्रॉमिस किया था क्लाइंट को कि मैं 45,000 में दूंगा, तो मैंने 45,000 में दिया। मेरा मैक्सिमम लॉस कितना है? 450 रुपये, माने अप्रोक्सीमेटली 1%, जो कि मेरा प्रीमियम वो चला गया। सिमिलरली सेकंड सिनेरियो, भाव हो गया 44,000, मैंने पुट खरीदा है तो मुझे 1,000 रुपया मिला, 1,000 में से 450 रुपया मैंने प्रीमियम दिया हुआ है, तो 550 रुपया नेट इफेक्ट, नेट प्रॉफिट मुझे मिला। सो ऐसे आप फ्लेक्सिबल प्राइसिंग का इस्तेमाल करके पुट में आप ऑप्शंस का इस्तेमाल कर सकते हो पुट खरीद कर। सिमिलरली ये आप देख सकते हो, बुलियन डीलर के पास 45,000 में इन्वेंट्री पड़ी है, उसने हेज किया पुट ऑप्शन में 450 रुपये प्रीमियम देके। अगर भाव ऊपर चला गया तो मैक्सिमम लॉस 450 है। सिमिलरली भाव नीचे चला गया तो सामने उसको इन्वेंट्री पे लॉस हो रहा है, लेकिन सामने ऑप्शन के प्रीमियम में उसको प्रॉफिट आ रहा है।
सिमिलरली ये छोटा सा एग्जांपल आप देख सकते हैं, 45,000 में मेरी खरीदी है, तो फिजिकल स्टॉक में मेरे को, आपको पता है, ऊपर जाएगा तो मुझे फायदा हो रहा है, नीचे जाएगा तो मुझे नुकसान हो रहा है। 45,000 के भाव में मैंने पुट खरीदा है 450 रुपया देके, तो मेरा ब्रेक इवन है 450, जैसे 44,500 आया वहां से मुझे प्रॉफिट होना चालू हो जाएगा ऑप्शंस में। और अगर भाव मेरा 45,000 में मैंने पुट खरीदा है 450 रुपया देके और वो अनफेवर हो गया, तो मुझे मैक्सिमम लॉस जो है वो 450 रुपया है। और सिमिलरली आप जो पे ऑफ देखेंगे, जब प्राइसिंग नीचे जा रहा है तो मैक्सिमम जो मुझे 450 रुपया खर्चा 1%, और अगर मेरा भाव ऊपर जा रहा है तो मुझे यहाँ पर फायदा हो रहा है, उन्हें मैक्सिमम लॉस हो रहा है 450 रुपया। सो अबाउ 45,500, 50 रुपीज से मेरा प्रॉफिट आना धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते प्रॉफिट आना चालू हो जाता है। यहाँ देख सकते हो 45,500 से ब्रेक इवन है मेरा जब प्रॉफिट आना चालू होता है। सिमिलरली फ्रेंड, दोस्तों लगता है कि M6 ओनली फॉर हेजिंग, नो, M6 नॉट फॉर हेजिंग। M6 में डिलीवरी भी होता है, डिलीवरी अराउंड 1 to 3 मेट्रिक टन हुआ है गोल्ड का सिंस 2003 से लेके आज तक की जो डिलीवरी हुई है हर कॉन्ट्रैक्ट में, वो 123 मेट्रिक टन हुई है गोल्ड में। सिल्वर में 3847 मेट्रिक टन है। और जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे न्यूली डिजाइन कॉन्ट्रैक्ट है, 1 ग्राम का कॉन्ट्रैक्ट है गोल्ड फीचर का, जिसमें हमारा 36.44 kg हुआ है, 2019 में लॉन्च हुआ था, 1 ग्राम में डिलीवरी। सिमिलरली 1 किलो और 5 किलो में हमारी डिलीवरी चालू हुई थी 2020 में, तो 16.5 टन हुई है 1 किलो में, और अराउंड 25.5 टन हुई है 5 किलो में। और फ्रेंड, जो प्योरिटी की बात करें हम, गोल्ड और गोल्ड मिनी में हमारा 995 प्योरिटी है, और गिनी और पेटल में ट्रिपल एन प्योरिटी, और सिल्वर के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में हमारी ट्रिपल एन प्योरिटी है। और जैसा कि हम बात करें कि MCX को पहले स्पेकुलेटिव गेन टैक्स में गिना जाता था, लेकिन अभी IT सेक्शन IT 43 के तहत अगर आप अपने फर्म के नाम पे ओपन करते हो और उसको आप अपने प्रॉफिट लॉस इनकम के सामने आप सेट ऑफ ले सकते हो अगर MCX में प्रॉफिट लॉस हुआ तो। सो नो लॉन्गर स्पेकुलेटिव गेन टैक्स है, इसको आप ऐसे नेचर ऑफ हेजिंग कंसिडर किया जाता है। और M6 में अकाउंट खोलने के 2 तरीके हैं, आप शेयर मार्केट में जहां पर आपका अकाउंट खुला है उसी को बोलिए अकाउंट खोल देगा, नहीं तो M6 के 650 मेंबर है, किसी के भी पास आप अकाउंट खोल सकते हो, दूसरा M6 में आप मेंबर बन के अकाउंट खोल सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स, कुछ भी क्वेरी है, एनी क्वेरी प्लीज बी फ्री। और ये PPT चाहिए तो आप प्लीज pmt@m6india.com पे आप ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू, ओवर टू साहिल जी। Thank you, Amarpal ji. Thank you. It was very crisp presentation. And now we move forward. अभी हमारे साथ हैं शिवराम जी, रिटेल गुरु से। शिवराम जी का 2 decades, 20 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस तनिष्क और टाइटन के साथ रहा है। उन्होंने मीडियम, स्मॉल, बिग सब प्रकार के एंटरप्राइज के लिए काम किया हुआ है, उनको सलाह दी हुई है। उनका एक्सपर्टाइज और एक्सपीरियंस है बिजनेस प्लानिंग, कस्टमर एक्विजिशन, स्टाफ हैंडलिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड बिजनेस ऑपरेशन मैनेजमेंट। जितना प्रश्न हमारे पास है उससे ज्यादा जवाब उनके पास है। तो मैं चाहूंगा कि शिवराम जी जब आपको प्रेजेंटेशन दें, आप ज्यादा से ज्यादा उसका फायदा उठाएं, लर्न मोर फ्रॉम हिम, एंड इन द क्वेश्चन एंड आंसर सेशन जब होगा तो ज्यादा से ज्यादा अपने क्वेश्चन पूछें, जो कि सबके लिए एक ही क्वेश्चन होते हैं नॉर्मली, तो सबके लिए ही एक साथ मददगार साबित हो। सो आई वुड वेलकम शिवराम जी फ्रॉम रिटेल गुरु टू टेक ओवर फ्रॉम हियर प्लीज। Thank you. Namaskar. I will start the presentation. Just a second. I think Ninad. Can you see the screen? Okay, one second. Yeah. Okay, so very good afternoon to everybody. I hope audio is fine and the screen is visible, right? And I would like to make it a थोड़ा interactive करेंगे, तो आप लोगों को थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। Yes, no, all right, color, ऐसा कुछ प्रश्न पूछूंगा, very simple questions, right? उसके लिए आप please respond कर लीजिए। quickly हमने I keep saying this, अमिताभ बच्चन जी से सीखा है, fastest finger first, right? तो आप लोग काफी लोग हैं, almost 120 people, so fastest finger first. Why did you want to attend this program, right? टॉपिक तो ठीक है, लेकिन हमने बहुत सुना है कि lot of time and effort is going on the BIS hallmarking, but फिर भी वो सब it's still on the back of your mind. But why did you decide to come today to win? Okay, next,
Rajesh Rokde, namaskar. All is okay, fine. So quickly, fastest finger first. East, west, north, south. देख लेंगे कुछ IPL हो जाए. Knowledge, okay. Learning, okay. Ideas, growth, okay, fine. So my request to all of you is, while I may move a little forward, you please continue to type so that I can also see your questions and comments. But इससे ज़्यादा आपके लिए फायदा है क्योंकि हमारा एक दूसरा प्रेजेंटेशन में हमारा एक बहुत अच्छा लर्निंग स्लाइड बोल के है. वो लर्निंग स्लाइड में लिखा है कि if you listen, if you do audio video, if you just write it down, if you explain to somebody, आपका benefit up to 90 to 95% हो सकता है, right? And और एक सेशन में एक बहुत अच्छा पेपर है कि आपका कोई भी गोल हो, right? आप लोगों ने काफी लिखा है, आइडियाज चाहिए, ग्रोथ चाहिए, लर्निंग चाहिए, नॉलेज चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो सब गोल है, right? And if we just begin to write it down, chances of achievement is 42% better. खाली लिख दिए तो मेरा नॉलेज चाहिए ये सेशन पे, हाँ जी हमको नॉलेज चाहिए. So if you type it over there, there is a decent chance, which is 42%, that you will achieve knowledge session, right? ये मेरा स्टडी नहीं है, वो कोई अमेरिकन टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी के, आपको चाहिए तो जाके चेक कर सकते हैं गूगल पे. So I really want you to make it interactive. If you don't have a paper and a pen, please go and get a paper and a pen in the meantime, so that actually there are action points, right? And मेरा गुरु से सुना है हमने, education without action or knowledge without action is entertainment, right? तो entertainment है तो काफी Netflix है, ये है वो है, लेकिन ये action point है. इसीलिए मेरा request ये है कि आप लोगों ने कुछ action लेके कुछ next 1 month, 2 months, 3 months का benefit उठाए, right? So all of you with me, if I'm okay with so far, please type yes, 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 yes. Yeah, all of you should do that, right? Not just 7 or 8 people, right? Very nice, very nice. Now the first simple question, right? If you want to win over a crisis, right? First and foremost, we should know कहाँ हैं हम लोग, right? And इसके लिए, hi Bhavin, right? इसके लिए simple मेरा favorite है ये traffic junction का lights, right? I want you to write down, and ये सब आपका फायदा है, right? I want you to write down आपका ये business का color कौन सा है, right? If you're doing well, आप लिख दीजिए कि green color. If you're not, so you're doing okay type yellow. If you are doing, अरे बॉस मत पूछो, इतना हालत खराब है, right? Then you write red, right? Just type colors, yellow, green. You have to be I will say you have to be tough on yourself, right? ये public, sorry if I'm pushing these points, right? This is not for somebody else, right? If you want, you can write right? Somebody started, Abdul Nasser red, right? Amit Rastogi green, Galaxy yellow, right? So it is for you personally, right? And how do I make out red, yellow and green? I'll give you a simple answer. नहीं तो ये हवा में चलता है गाड़ी, right? हवा में नहीं चलना गाड़ी. We are in the month of April, okay? March, I would think is or was reasonably okay, right? It was not normal, but it was not locked down. April में बोल सकते हैं नहीं सर वो बहुत लॉकडाउन है. March में what was it in your mind और आपने क्या अचीव किया? 66% के ऊपर आपने मार्च का टारगेट्स अचीव किए तो आप ग्रीन बोल सकते हैं. 33 to 66 बोले तो येलो बोल सकते हैं. 33 से नीचे है तो रेड बोल सकते हैं, right? Now you re-look at it, like Pankaj is saying, green till April, right? Now I want you to re-look at the numbers, right? 33 से नीचे red है, 33 to 66 is yellow, 66 to 100 is green, right? So all of you now need to recalibrate, right? Because this is a new year, renew करने का है, realign करने का है, इसीलिए हम सब लोग यहाँ आए हैं, correct है, right?
So I need some more answers. Crisis. Yeah, right. So there are two spellings here. Venkat, thank you. Crisis is one, crisis is plural. बहुत crisis है, multiple crisis है बोले तो double CES हो जाता है, right? Okay, so I'm getting some greens, yellows, reds. Lockdown is the biggest problem, etc., etc. Right? Now all of you have got one color in your mind, irrespective of what you're writing it out here, right? If you have got yes on my mind, honest color, right? Just type yes. Then I'll go to the next question. Yeah, okay. So somebody saying yes. I want you to listen to this beautiful video, and it is a little bit relevant to us also in the industry. Can you hear it? If you can hear, things type are yes. going bad, there's going to be some good that's going to come from it. Oh, mission got canceled? Good. We can focus on another one. Didn't get promoted? Good. More time to get better. Didn't get funded? Good. We own more of the company. Didn't get the job you wanted? Good. You can get more experience and build a better resume. Got beat? Good. You learned. Unexpected problems? Good. We have the opportunity to figure out a solution. When things are going bad, don't get all bummed out, don't get startled, don't get frustrated. No. You just look at the issue and you say, good. You go forward. And lastly, if you can say the word good, it means you're still alive. You still got some fight left in you. So get up, dust off, reload, recalibrate, re-engage, and go out on the attack. When you're making a diamond, three things have to happen. Number one, they have to put you under immense heat. You got to get burned. Don't run from the difficult classes. Take them. Go to the heat, because the sooner you go to the heat, the sooner the dream. Then after the heat, they have to put you under pressure. Little pressure, little progress. Stop taking shortcuts. Stop taking the easy way. Go through whatever God wants you to go through. The final thing you have to do is you got to cut it. It's the cut that makes it valuable. Yes, you have a dream, and the process is not supposed to be comfortable. So if it hurts, if you feel like you're under heat, if you feel like you're being pressured, welcome to the big leagues. When God looks like he's pulling you back, eventually he's gonna let you go. And the farther he pulls you back, once he releases you, boom. Once you find those things that will make it worth it for you, it is done. It's a done deal. You know people, you've seen people that you can predict early on. That person is going to be a diamond. You know it. How they carry themselves, how they take care of business, how they follow through, how they keep their commitments to their commitment, how they work the system, their energy level, their passion. You know it. The mark is on them. You know it. That one's going to make it. The people must see that in you. And we've all had experiences where we were working on something and we knew it was possible. We took the responsibility to make it happen. Other people couldn't see it. A lot of people didn't believe it. People were opposing you, but you kept on doing it. It was hard, it was rough, it was difficult, but to you, it was worth it. And eventually you got to a level you know, can't nothing stop me now. I'm on the move. I'm on the move. Very nice. So how many of you kind of agree to it? How many of you want to become that diamond, right? There will be pressure. There is already pressure. There is heat. And now you have to cut it to make it into a valuable diamond. Otherwise, it is just a rough. How many of you agree with it? If you agree with it, type yes, I am ready. Yeah, just say I am ready, 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 ready. Sahil Bhai says yes, Venkat says yes. All of you. See, it's end of the day, it is for us, right? For me, myself, where is you, right? Okay, right? Now I want you to go further down. I have written here, sorry, I missed this, right? Red if your store is shut over the weekend. Now let's talk about this week and now the future, right? If your showroom was shut last week, last Saturday, Sunday, then I'm in red color. If I shut over, sometimes only over the weekend, I still had 5 days of doing the business. And if my store is still open,
I am in green, right? So you're getting the sense what I'm trying to say, right? You have to get a traffic light signal in front of you. आपका टेबल पे, आपका मोबाइल पे, आपका सब जगह पे ये दिमाग के अंदर जाने का है, right? And then if I'm in red, and lot of you are saying red, right? Some things are outside your control, right? वो lockdown होगा नहीं होगा वो हमारा हाथ पे नहीं है, because at the end of the day मेरा एक showroom है, right? Now I want to go from red to yellow, yellow to green. If I'm in green, I want to stay in green. And what is going to happen in the next 15 days, 20 days, 30 days, we don't know, right? But, and that's really what this whole session is all about, is what can we do over the next so many days or so many weeks, right? Very nice comment, right? If you got a pen and a paper, write down. If you don't have a pen and a paper, if your camera is working, please take a point. Very, very interesting. Lots of us talk, मेरा ये 100 crores का धंधा है या 10 crore का धंधा है या 500 or 50. But that is talking point. इसको बोलते हैं इंग्लिश में vanity point. बोलने के लिए बहुत अच्छा लगता है. लेकिन profit is sanity, right? It is on the books or it is in our inventory. But really, cash flow is what makes sense whether we are in a crisis or crises or not. How many of you agree that cash is reality? We may be personally wealthy, but ultimately it's coming down to how much cash flow you have, right? And that is really what matters, right? If many of you are coming to this session, probably because somewhere at the back of the mind, there is a cash flow issue, right? If you agree with what I'm saying, there is a cash flow kind of an issue, type I agree. If you don't have a kind of a cash flow issue, say I don't agree. Let's hear some responses. Again, coming back to same signal, right? You might have written red color, yellow color, green color, right? Sometimes क्या हो जाता है, when you're too close to the problem, every problem becomes so big, right? That's why sometimes, you need to, what they call as the helicopter view. You need a third person to look and say, "Arey Baba, itna problem nahi hai," right? So what I really want you to do now is go back and say, is your problem big or small? Whatever is your color, red, yellow, green, is your problem big or small? Just type big or small, big, small, medium, large, right? So please type. It's for you to size the problem, right? You have to size the problem. नहीं ये बहुत छोटा प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, नहीं सर ये मीडियम चलेगा, राइट? 1 2 हफ्ते 3 हफ्ते 4 हफ्ते में मेरे को कुछ तो कुछ किए तो ये प्रॉब्लम से थोड़ा इंप्रूवमेंट हो सकता है, निकल सकता है क्या, वो देखेंगे, राइट? वो कितना मेहनत करेंगे हम लोग उसके ऊपर चलता है. So very nice. I'm now seeing, medium and small problems, right? So I go back to, I'll use Venkat again. So maybe it is some more answers, right? It may not be crisis as in plural, right? It may be a crisis as in single I, which means ठीक है सर, हमारा छोटा मोटा problem है, वो solve कर लेंगे, right? How many of you, some more people, some more answers? Small, medium, large problem. What is the size of the problem? Small, medium, large, right? More number of people I would request you to answer, right? And it is for you. End of the day, आप एक color sketch pen लेके 3 circles बना दीजिए, उसके अंदर लिख दीजिए कौन सी color है, कौन सी size of the problem. Yeah. So many people are saying, Ashish ji is saying small, somebody is saying, Rashmi is saying medium, Vastupal is saying medium. It's important to size the problem, right? Some more, right? One more answer. Medium. Okay, so medium, small, medium. Nobody's writing, large. It's not that heaven is going to fall on us tomorrow morning. Now, if this is the case and I am sitting at home for whatever is the reason, or the store is, is not very busy, or maybe you're sitting in the office, the question really is, I want to ask you, can any of you give one example on what is the kind of problem you're facing? I have a couple of questions and answers, but I want to understand from you, what is that problem? Whether the problem is small or medium, what is the problem?
Be specific. So then we are coming from red, yellow, green, small problem, medium problem, and this is the problem. Okay, customers not coming. Okay, fine. Then lockdowns, uncertainty about the future. Okay, very nice. Some more. 10% answers, right? 130 people. So 8, 10, 12 people should reply. So one is lockdown, that's outside your control. Now let's go into little more about what can we do about ourselves. So customer not coming is fine. Footfall is less, fine. So that is somewhere in the space of customers and customer marketing. Self mental state is not good. Very nice. Wonderful question, right? So enthusiasm is less, right? क्या करेंगे sir? Customers नहीं आ रहा है, बैठ के थक गया हूँ. I'm getting tension, right? Or I'm worried. I'm not getting sleep, right? Incoming stop, outgoing on. Very nice, right? So cash flow is the issue. My consumers are not coming. I am not able to convert my investment into cash. Correct? Right? Am I getting the problems, clear from what you're saying? Right? So more expenses. Okay. People move to other instruments. Okay. Right? That means, people are not buying gold. Maybe they're buying mobile phones. Right? Very strong corporate competition. Uncertainty in metal prices, you must talk to MCX, right? They've just given you a 10 minutes presentation, right? Sales returns are happening. Overall, it is very depressing. So somewhere thoda mental bhi hai, mental problem, mental challenges bhi. Okay, less income, more expenses. Come on, more number of people. Okay. Now this is what I thought would be our, I'll just bunch it up saying that, less income, more expenses, what is that? Less inflow of customers, very strong competition, whether from corporate. If you go and ask the corporates, they'll tell you corporate competition from small and medium family businesses or whatever, non-corporate businesses. So competition is here to stay. Wo jayega nahi, right? So what we should really look at it is what can I do? Right? Oh, competition will always be there. New customer, new client, new retailers will always come. Some customers will go on to other type of products. They may not buy jewelry. They may not buy gold, diamond, whatever. Okay. So let's bring it down to, let's say, a cash flow as an issue, right? Now to generate this kind of a cash flow, there are two things. I think somebody made a comment, right? Inflow is less, expenses are more, right? Similarly, and I want you, some of you may be familiar with what is my favorite topic, right? My favorite topic is stuck inventory, especially inventory. But there is also other places where the investment has been stuck, right? Can any of you start typing where is that place where your money is stuck? Now, let's not say customers are not coming, right? Customers are not coming. Uske liye wo marketing ka problem hai. That I'll come back to you in the fifth step, right? But let's identify where the problem, because ye mera control pe hai, right? Customer not coming, 50-50. I will say 50-50. 50, I cannot do much, but 50, I can still do something to get a few more customers. But like Sanjay is saying, Sahil Bhai is saying, so many people are saying, right? It is either real estate or inventory. Am I correct? So if you're agreeing with this inventory, real estate kind of a problem, please type yes, 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 yes. Okay. If there's something else which I have not thought, right, please type. And I see a few people responding. I request all of you to respond, because ये सब action plan है आप लोगों के लिए, right? मेरा yellow color है, yellow color में एक medium size problem है, medium size problem में मेरा inventory का problem. So you're able to say, boss, ये इसका मेरा action plan है. That's what I said. This is an action meeting. This is not knowledge. This is not entertainment. Okay. So I have identified. So somebody saying nowadays stock is important, but you have stock, you will win. But when market pickup is not there, when the market will pick up is not. Okay. So those are all the points, right? So inventory we require. तो हमने फर्स्ट मोटा मोटा स्टेप में हमने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन किया है, राइट? द नेक्स्ट क्वेश्चन आई वांट टू आस्क यू रियली इज
how many of you are really making a habit of monthly profit and loss statements? कितने लोग करते हैं कि एक मंथली प्रॉफिट एंड लॉस, मेरा इतना सेल हुआ, इतना मेकिंग चार्ज मिला, इतना मेरा खर्चा है, इसमें इतना प्रॉफिट है, और आई इन्वेस्टेड सो मच मनी इन माय इन्वेंटरी. हाउ मेनी ऑफ यू मेक ए मंथली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट? No, I don't make monthly. Okay, we are making monthly, right? So a lot of people saying that we are doing it. Maybe 70-80% is saying we are doing it. Maybe 10-15% is saying we are not doing it, right? So first and foremost is you have to make a monthly, not so much sincerely, right? That's an honest answer. And a lot of people who don't reply, from our experience, is they are not making. राइट तो इसके लिए आपको you don't need very complex P&L statements. आपको मालूम है कि कितना सेल हुआ है, आपको मालूम होना चाहिए कि कितना मेकिंग चार्जेस या वैल्यू एडिशन से आपको पैसा मिला है. From that you subtract how much you paid your vendors or supply partners, and then उसके साथ क्या क्या expenses है, right? शोरूम का expenses है या ऑफिस का expenses है, then salary expenses है, maybe there's a loan, etc. Right? Now you know that, okay, listen, I have so much of expenditure, there's so much of income, there is so much of expenditure. Okay? Step number 4. Step number 4 now is, now that I know that there is a gap, right? I'm assuming there is a gap, because that's why most of you are saying that, listen, I believe there is a crisis. I know that there is in yellow. I know it is in red color. And I believe we have shortlisted saying that mera paas cash flow problem. And if I'm identifying cash flow as a problem, I need to cut costs, right? There is no other magic wand, because what I'm talking about is what we have under our control. Some of it at least is under our control. Okay, now tell me, what are the few things that you, and it's all about you, may not be exactly applicable to you, but please type what is it that you can do today to cut costs, right? Let's assume that if you were to do this hand loan, maybe you have a rented property. Can you vacate a rented property? Maybe there is an idle property. That means property you have taken, but you have not used. Maybe there is something that is half finished. There could be many places where your money is stuck. And I'm not even coming to the inventory portion, right? Now tell me, do you think you can do one action point? Just one on this first one, cut costs, right? Tell me, right? You need to type, right? Only when you type, it will start going into your mind, right? You can, if you want, you can type yes, you say yes, right? आप paper पे लिख दीजिए आपका real problem क्या है, right? Can we see 1 or 2 answers? Need to be wonderful, need to be more stingy, right? थोड़ा पैसा tight करने का है, right? इतना खर्चा कम करने का है, right? Some more people. What can you do to cut costs, right? Maybe we all thought that, COVID chala gaya hai, then go back to normalcy. लेकिन वो नहीं चल रहा है गाड़ी, right? Again, there is some lockdown issue. दिल्ली में lockdown, अभी महाराष्ट्र में पता नहीं क्या होने वाला है, right? So clearly, maybe you can still sell, you can vacate. Maybe there is 3 months notice. Maybe you can figure out whether you can operate from 50% of your office space, especially if it is rented, right? So like that, right? Or maybe you're giving credit to somebody. Can you control those credit lines, right? All of it is technically avoid wasteful expenditure, right? Now, after doing, isko bolta hai na, first cut, right? First cut is always, nahi sir, ye chahiye, wo chahiye, ye chahiye, wo chahiye, right? There is never an end to this kind of cost cutting, right? Once you have done the first round,
suppose for example, I always take this example of if you have got a property on rent, right, and you're expecting a certain rental, and because of the market, the rental has come down by say 30%, right? One option is to wait for that rental to go back to the original number, or if you assume and you start saying that ye ek saal tak to koi nahi aane wala hai at this price, even if you give it away at 70% rental today, you will still make more money than probably waiting for that final, that original price to come, right? Somebody saying, Pratiksha says, we are making golden furniture that we are not using it at all. Wonderful. Right? That means you are actually overbuying, right? If you don't have what in my language called an proper stock or an ideal stock, you are constantly overbuying without seeing what can be the potential. Okay, how is it going so far? Please tell me yes, no, all right, or you can give me red, yellow, green codes. Then we move to this step number 5, and I'll open it up for Q&A, right? Vastupal says, good, please, some more. Red, yellow, green quota, color coding of the session so far. I think we have done about half an hour. Wait. Dark green, I like that. Dark green will now become black. Okay, red hot. Ashish, thanks. Okay. Inventory we are doing out good because of your advice. Very nice, very nice. Right? So there is first level saying that, listen, you know what, we need to cut costs, right? And purposely I have written there 2 rounds. Why? Because first round pay, hum tight nahi rehte, hum strict nahi rehte. We are not strict. Sometimes you might need a third party like me to come and say, you are not doing the right thing. But seriously, I think you have to go to a second round. Only when you do the second round, you will start seriously looking at it. Otherwise, all of us don't want to sell anything at a loss, including me. But it takes real determination to say, nahi, I would want cash today, and I'm willing to sell it out at a particular price. Why? Because, it takes 12 more months for me to, kind of get a tenant for that property. But today I'm getting somebody who's willing to pay only 50%. But at least 50% cash flow to hai. Right? So that is something that you guys have to think it. Having done that, right? How many of you, okay, let me ask you an action point. How many of you will do an exercise to evaluate and cut costs today? Kitne log karega? One word, yes, no. Rakesh Saraf, somebody is typing, so I can see Rakesh ji, right? Yes, no, yes, no. So it's an action point, right? You have to sit down today, 12 o'clock is the deadline, and you say, listen, this is an action that I'm taking. Vastupal Ranka, if you have done already last down, go back to version 3, version 4, version 5. As long as there is a gap between expenditure and income, you have to go back. You have to go back and see, is there still, if you are from the manufacturing industry side, they'll tell you it's called sweating the asset, right? Aapke paas, I was talking to somebody, and I'll give you a simple example. Golden furniture, my favorite item. What is the average golden furniture with you? Just put a percentage. Kya hai aapka? What is the percentage of golden furniture with you? %, 15 to 20%. %, okay, my favorite is 33%. Okay, if you got a 1000 square feet showroom and if you got 33% dead inventory, you technically require only 66% of your showroom, right? Aapko ek temporary wall dalne ka hai to dal dijiye, please. Right? I know it's not a very simple thing to do, but if it is really possible to push the wall, put an artificial wall, only 66% of the showroom is working, it is better. Because apart from the dead inventory, you're paying for everything in that showroom. You're paying air conditioning, you're paying, everything else over there. Dinesh Bolasan says 30 to 40%.
right? Are you guys agreeing with what I'm saying? Right? If you have got 30, 40, 50%, 30 to 40%, which is the real number that I keep getting from everybody, when we start analyzing the data, 33% of your system is not working. It's like if you know a smoker, if he's a regular smoker, his lung is operating at only 66%. 33% to gaya lungs. So in exactly the same manner, 33% of my showroom is not working at all. And I'm just waiting and keeping and heating and cooling that show, that portion of the show. All of you with me so far? Okay. Now we come to the second portion. So I want to cut some costs. I got some real estate, which I will try and do something. And inventory itself is a big project. We can talk about it another time. That's another area of cutting, right? If you're overbuying, that's another area of evaluating. If you're giving credit lines, that's another area of evaluating. Now let's come to the second thing. Somebody said, I don't have enough walk-ins. My walk-ins are low, etc., etc. Again, go back to your expenditure and income statement. Please identify how many more customers you want, right? Please check your current or last marketing strategy, right? I'm talking to some people, they say, nahi sir, COVID ke pehle humne advertisement karte the. COVID whole of last year, I have stopped advertising, right? Please remember that out of sight is out of mind. आपको चाहिए तो लिख दीजिए, right? Out of sight is out of mind. Somebody type here, right? This is one area where I think you must continue to make your presence felt in front of the customer. शायद आज नहीं आ रहा है customer, लेकिन customer घर में बैठ के Facebook देख रहा है. Next one I'll talk about online. But if you are not there, and like somebody said, they are going to some other category, because that some other category is advertising. मेरा पास 10,000 रुपये है, 50,000 रुपये है, मेरा मोबाइल फोन का फुल पेज का एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, लेकिन हमारा कैटेगरी का कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं आ रहा है. तो व्हाट विल आई एज अ कंज्यूमर डू? Spend money on an advertised category, or will I come and search of your showroom? Please type. Where will I go? If I have 50,000 rupees to spend, which I've saved from not going on a holiday, where will I spend? A category where I'm seeing advertisements, or will I come and spend in a category which is not advertising? And we are looking at an industry together. Please type, please type. Customer will go to the advertiser. Simple, right? So you have to invest on that one portion of that effort, right? So it's not about today, it is about getting this customer, being there where the customer is thinking. मेरा पास एक छोटा एक toy था, right? It's like a dinosaurus. If something bites its tail today, apparently it comes to know about it after 2 months or 3 months. Similarly, even our consumers, even us, right? If something happens to us today, एक महीने लग जाता है कि इसको कुछ करने का. So if she's sitting at home today, maybe there is a lockdown, she's browsing the internet and she sees your advertisement. ऐसा नहीं है कि शाम में आके आपके पास 50,000 रुपए का माल खरीद के जाएगा. she'll say, अरे वो advertisement है, देखेंगे. 2 दिन के बाद दोबारा देखेगा, 4 दिन के बाद दोबारा देखेगा, 2 हफ्ते के बाद उसका दिमाग पे जाएगा, अरे कुछ खरीदने का है जीवन. शायद 1 महीने के बाद आपको एक छोड़ा एक फोन लगाएगा, आप दुकान खुला है क्या? 1 month later, 1.5 months later, when I'm comfortable to go out and shop, I will probably come to your showroom, right? So that is the necessity, like the way you have a showroom, that is the necessity to advertise. Yes, Ranka is saying correct, Vastupa, right? People will forget you if your presence is not seen. How much old as it is, how much old as your jewelry you are, is your jewelry you are, right? So my request to you is, please look for proper advertising spends. In addition to that,
back calculate and say मेरे को 10 customers चाहिए, 15 customers चाहिए, 15 customers चाहिए extra, क्योंकि मेरे को break even चाहिए. I'm currently talking about just say breaking even. Another point which we normally don't do, and I don't remember we have a specific slide here, is how to get more sale from existing customers. Right? वो सोचते नहीं है हम लोग. Right? You have to sit down and see whether there are existing customers to whom we have not reached out. Is there a plan? Because it's easy to sell to an old customer than to sell to a completely new customer. So if I know I want 10 new customers, if I have got 5,000 old customers in my database, how easy is it to get 10 customers from this 5,000 or 10 customers from these 5 lakh people in the market? You tell me which is easier. Which is easier? Which is easier to get? 10 people out of 5,000 people who have come to your showroom in the last 3 years, or same 5,000 people who have never come into the showroom? Ambasan, we will come back to your question. Just tell me when I open the question session, question and answer. Vastupal says, Vastupal, Sri, everybody saying 5 out of 10 out of 5,000 is easier. So you have to go back and see where and how I can reach out to these 5,000 customers. Okay. There's another area which I really want to highlight. I know that on the 25th or 26th, Amazon is talking about a special session only for jewelers to export, using the Amazon platform. My request to you is please attend that. In addition to that, start thinking about going online. Trust me, this is the future. And for me, the favorite story is maybe 15-20 years back. आपने सुना एक स्विस आर्मी नाइफ का एक डीलर था इंडिया में, and he was not in any main street. He was actually operating from a chawl in Bombay. In fact, somebody asked him, I said, where are you? He said, hey, I'm in a chawl in Bombay. If a Swiss Army knife sold from a chawl, he was India's #1 retailer of Swiss Army knives because he went online. So if you are operating in any town, your surface, the distance by which your customers will physically come is maybe 5 kilometers, 10 kilometers, 15 kilometers. But if you suddenly say, no, my whole country and maybe whole world is my market, then the market is infinite, literally infinite, right? There is something called a Google My Business, which is focused on local markets. These are the areas where you need to market, where you need to make your presence felt. You need to build an e-commerce platform. If you do it today, in 3 months, 6 months, 9 months, 1 year, it will start yielding results. But the investment is to be done now. And I jokingly and seriously say that आपका dead inventory का पैसा निकाल के यहाँ डाल दो, advertisement में डाल दो, marketing पे डाल दो, नया customers को लेके आने के लिए, मेहनत करने के लिए वहाँ डालने. Okay, all of you, okay? We got another 10 minutes and then I'll open it up for sessions. I just told you about this. It's 24th of April, Saturday, 2:30 to 4 p.m. Right? It is the GJC thing. They have sent you so many messages. Please register and attend. Step number 6, like the video said, reload, recalibrate, and re-engage. And I want to take this one point here. Look at the picture. What do you see from the picture? The picture is talking about a boy and a girl, and actually 2 girls. The boy is building a relationship with one girl, but he's also building a relationship with another girl. So you need to build consistent relationships. And I keep using this as an Indian marriage system. Today we have a Western marriage, a Western boyfriend-girlfriend relationship between a retailer and a vendor. A retailer has 100 vendors. A vendor has got another 100 retailers. So nobody honestly cares for that other guy. आप आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया. आप माल लेके आया था, शायद हमने खरीदेंगे. आप नहीं आया, हम फोन भी नहीं करेंगे. अरे भाई कहाँ गया? आपका माल नहीं आया, आपने नहीं आया हमको मिलने के लिए, या आपने WhatsApp नहीं भेजा. The vendor is also the same situation. Right? He says, listen, I called you 3 times, sir, आपने माल उठाया नहीं है, मेरा टारगेट करने का है, मैं दूसरा वेंडर आपका दुकान के बाजू का कंपटीशन में जाके बेच के चले जाता हूं मैं.
क्योंकि आपने हमारे को रेगुलर ऑर्डर्स नहीं दे रहे हो. How many of you agree with this? Current situation is not good enough, right? If you agree with this, we need an Indian marriage system where the vendor and the retailer get together for benefit of win-win. How many of you like that? If you like that win-win situation, please type win-win. I want to see some response. Do you agree with what I'm saying, or you're saying no, yes sir, ye nahi bakwas? So go back, sit down with a select set of vendors, and vendors, I'm assuming some vendors are also here. Please go back and sit with your people and say, listen, we want to become a partner. What is it that we can work together? Today, one of the reasons for this high inventory is there is a push in the system. The Karigar is making something, he's giving it to a vendor, the vendor is buying, I've got so much of stock, I've got golden furniture, I'm pushing it on a retailer, the retailer is buying something because I'm giving it on credit, so we are trying to push it up, and everybody's money is stuck. The retailer's money is stuck in golden furniture, the wholesaler's money is stuck in, credit to the retailer. Everybody's got unnecessary inventory. Imagine if you have got a 30% dead inventory in the system. It is, if you take 3 lakh crores as our annual rotation and 1 lakh crore of inventory at any given point of time, 30,000 crore worth of inventory is golden furniture. 1 crore, 2 crore nahi hai wo. 30,000 crore. Right? How many of you are understanding or agreeing to what I'm saying? If you're agreeing, just type yes. This is very important because vendor-retailer relationship is critical for us. Then we have the money for marketing. Today, if you are complaining, sir, मेरे पास पैसा नहीं है क्योंकि मेरे को cash flow problem है. Cash flow problem क्यों है? मेरे पास dead inventory है. Dead inventory क्यों है? सर मैं तो खरीद लिया, credit पे मिल गया, लेकिन आपका पैसा नहीं है marketing करने. लेकिन हमने 30% का पैसा हमारा हाथ में है, then हमको 2%, 3%, 4% हमने marketing में डाले तो मेरा customers आएगा. मेरा customers आए तो rotation में. Right? How many of you see that it is making sense? Review, like this is a 5-point business plan. Write your business plan, rewrite your business plan, review your customer relationship. We just wrote 10 out of 5,000 is better than 10 out of 50,000 in the market. Review your golden furniture. Review your operation efficiency. 30% का माल जरूरत नहीं है, मेरे को दुकान का जरूरत नहीं है, second floor जरूरत नहीं है, second floor बंद करके ground floor पे आ सकते. Nothing wrong. Lots of retailers whom I have spoken, अरे सर लोग क्या कहेंगे? अरे लोग आपको पैसे आके नहीं देने वाले हैं. When there is a cash flow problem, nobody is going to come and give us the money. So I would rather shut the second floor, bring that stuff below, and operate with reduced overheads. If you are spending 1 lakh rupee on electricity bill, you will save 30,000. As simple as that. Then last, this is the point, upskill your staff and yourself. This is the time to upskill ourselves, right? Sure, we all want to watch maybe a movie, maybe watch what's the latest on that, COVID situation, but this is the time, right? This is the time to really get people to upskill. Digital marketing सिखाने का है, customer acquisition सिखाने का है, relationship कैसा build करने का सिखाने का है, आपका अच्छा stock कैसा improve करने का है, उसके बारे में दिमाग डालने का है, नया business plan डालने का है, वो सब please put that together. Okay? All of you with me so far? Yeah? This is what I said. Take advantage of the time that is available. Get somebody to coach you. Go build some small groups. Of course, we can always coach you, but that's the point, right? Train your staff. 66% is the current conversion in our industry. 33% of the people are going back, right? 34% non-conversion, 34% golden furniture. That means if you had a 20 crore rupee business last time, you left a 10 crore rupee business. And we are talking about this 10 out of 5,000. These 5,000 people came into the showroom, they did not buy. So if you had a 20 crore rupee business, you left 10 crore rupee business. If you have a 100 crore rupee business, you have left a 30 crore rupee business. So that's the price of non-conversion. Why there is a non-conversion? You can go back and we can discuss, and so many things are. But this is the time to go back and
work on your business plan and all the 5 topics. Okay. Now here's another homework, right? What is the homework? I am looking at the next 10 days. How many of you ready to take a 10-day challenge? Let's hear some more people. Yes, type karne ka. If you are not willing to type an yes, I think you're not ready to take a challenge, right? Please type an yes. Rakesh bhai, aap bhi type karne ka. All of you. This is directly addressed to you. Haji Sahil bhai, we'll close by about 3:20. It's okay. Like, see, now we have some serious customers only out here. So those who are attentively listening, Okay. they're responding also. It's up to you. Like, I keep telling this, you know, हमारा non-conversion चला गया है, अभी conversion होने का. The only conversion thing is there. So you have a 100% conversion rate out there. So it's up to you. We have 100 people. Okay, thank you. Now, seriously, this is the action plan. Right? We are on 20th today. We should at least plan for the next 10 days. Right? And I will go back and put that. And if you give me an action plan, I will promise you to give you a feedback. Right? Here is a 10-step action plan. Right? I'll go back to just note down this number if you want. But you have to write about this 6.1 to 6.5. Up red, yellow, green dala hai. From there, you come down and said that, listen, I have a cash flow problem. Whatever is your problem. I don't know what your problem is, but write it down. I really don't need any specific, confidential information. Mere ko zarurat hi nahi. But what you should say is that, listen, in the month of May, right, assuming that the market opens, I assume that the market will only open for 5 days. I think market may not get opened on Saturday, Sunday. I don't know, right? So create what I always keep talking, a conservative business plan. वो आप achieve करोगे, वो आपका जिम्मेदारी है, वो staff का जिम्मेदारी नहीं है, right? You must write down saying that, listen, I believe I will only do 50% of my March performance. That is still okay, right? That is still okay. But what you should now say is, I will say I'm supposed to do, let's say 10 kilos, right? I did 10 kilos in March. I will do 5 kilos in the month of May. That's why I'm not talking about April. I know some places are shut, some places are closed for weekends, whatever. Assume that there are only 5 days of working. Weekends will continue to be shut. Nights will be still locked down. Pata nahi kya hone wala. But 50% to hona chahiye. Because most of you said mera yellow pe hai. Now that I have a 5 kg target, I'll try and put the whole thing together for all of you. To achieve 5 kg target, I want 250 customers, right? 20 grams, 5 kgs divided by 20 grams, average ticket size is 250 customers, right? Now, yet 250 customers, out of which maybe 100 people or 150 people will hopefully come because they know you already or they have been your customers in the past. Pata nahi, let's assume 150 or 200 people will come, even though it is only 50% of the time. 250 अपने आप आ गए तो खुश हो जाएंगे. नहीं हुआ तो, right? Some of the questions when I said was, "Arey sir, my problem is walk-ins. My problem is walk-ins. My problem is walk-ins. I don't know how much money to spend on marketing." Now you will get saying that I need 50 more customers. For those 50 more customers, मेरा 5000 लोगों का contact details है. आपके पास नहीं है तो पकड़ने का. Right? Go to Facebook, start advertising. Go to Instagram, start advertising. Find out if there is a customer who has got a birthday. Find out a customer who has got a anniversary. I don't know what that festival is in the month of May, right? But Akshay Tritiya is there, right? Akshay Tritiya is a big festival. What are you doing for Akshay Tritiya? Can I hear that? Let's hear that interesting question. What is your plan for Akshay Tritiya if your store is not open? If the store is open, the problem nahi hai. Correct? What is the plan? Let's see. We literally, it is 22 days. 12th of May is Akshay Tritiya. Let's hear what is your plan. Do you have a plan if your store is closed on Akshay Tritiya? Physically, if your store is closed, what is your plan? Do you have a plan? If you have a plan, what is it? Okay, Vastupal says online sales. Giriraj says yes.
digital marketing. Digital marketing is marketing. I'm talking about sales. And I will put the same point back to the manufacturers and vendors here, right? What is your plan to reach out to the retailers who are also saying that, listen sir, हमारे को माल नहीं चाहिए आपसे. काफी लोग बोल रहे हैं आजकल, right? There are retailers who are saying, नहीं sir, sale नहीं हो रहा है, माल नहीं चाहिए, right? So what is your plan? Some more people. No plan. Sumit says no plans. I will say no comments means no plans. Correct? Eh? So if you have not thought of, please take this as an action plan. It is very easy to set up at least a what they call as a online sale of paper gold or paper gold coins, right? No plan, no plan, no plan. Yeah, you can call Pratiksha. You can say how is your family and friends, and if they need anything, then we can help. Sure, but that is being nice, right? You need business also, right? That you can't do on Akshay Titiya Day, right? I'll say suddenly you want business, that's why you're calling me, right? You have to be proactive. You have to, if you have to do that, how are you call has to come today. Then I will suddenly remember, हाँ एक jeweler है मेरा घर के पास में, वो phone किया था. Okay, all of you with me so far? Okay, how many of you will send me an action plan? Let's hear that, right? I'll give you the next one, my contact numbers, and then we'll open it up for Q&A, right? Tell me how many of you will send me an action plan. Let me see, my number is there, my email ID is there. If you give me an action plan, I'll give you a response. At least 1 or 2 comments I'll give you. Especially people who have no plans. Right? Now you have an action plan, right? मेरे को ये मोटा problem है. Thank you, Sahil bhai. Right? मोटा मेरा problem है. Right? If you had no problem, then you wouldn't be among the 100 people today. Correct? That much we have to accept. Yes. So I seem to have a problem. Small, medium, large problem. Red color, yellow color, green color. So it is a red and yellow. Small, medium, large is my problem. Finally, we said इसमें problem क्या है? शायद cash flow, शायद भी नहीं. पक्का आपको आपका बंदा के बारे में मालूम होना चाहिए. सर मेरा cash flow problem है, मेरा customer का walk-in का problem है, मेरा golden furniture का problem है, मेरा staff का problem है, ये problem है, वो problem. You must identify. If you have identified, what is the action plan? So you have at least 10 days का काम है. Even if the showroom is shut, even if I can't do any business, I have enough work to do for the next 10 days. Trust me, it is not an easy to build a good plan. आपको वर्षन होगा 2 दिन में, वर्षन 2 होगा 4 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, पक्का एक्शन प्लान हो सकता है. उसके ऊपर आप काम करोगे. Right? How many of you like what you are willing to commit? Yeah, it's not for me, it's not for anybody else. It is for yourself. Right? So how many of you are agreeing? काफी लोग हैं, लेकिन Venkat says yes. Some more. आपको चाहिए तो you take one photo of this. Sahil bhai, you remember my number? It's very easy to remember since you are the first one to reply. 90 degrees, 360 degrees, 365 days and 24 hours. Oh wow. Right? So you can't even say I don't remember his number. You can't say I forgot to take the photograph. Yes. Right? Nothing, no excuses. Yes. Absolutely. In fact, I would request all the members attending, हम लोग का सबका problem एक ही है. कई बार हमको problem, we don't need anybody's की numbers उसकी problem कितनी बड़ी है छोटी, but ये जो भी हम मेरे से कोई भी question पूछता है, सबके problems common ही है. तो आप हिचकिचाइए मत. आप अपना भले हिंदी में पूछिए, इंग्लिश में पूछिए, कोई इशू नहीं है. लेकिन आप जितना पार्टिसिपेट करेंगे ना, उतना ही फायदा आपको होगा. क्योंकि कई बार क्या होता है, हम लोग समझते हैं कि जैसे एक बड़े रिटेल गुरु के आगे कहीं अगर हम हिचकिचा जाएं और अपना क्वेश्चन ही नहीं पूछे तो हमारा ही नुकसान है. उनका तो कोई नुकसान नहीं, वो तो अपनी तरफ से बता के चले गए. लेकिन अगर मैं पर्सनली बोलूं
कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन भी पुट अप करता हूँ शिवराम जी को, उन्होंने बताया था कि इंडियन मैरिज सिस्टम जैसे होता है कि वेंडर और रिटेलर को कैसे करना चाहिए, तो आई रियली एग्री टू इट, क्योंकि पहले तो हमारे जो जितने भी रिटेलर्स थे, हम एज अ वेंडर एक बहुत ही क्लोज रिलेशन फॉलो करते थे, लेकिन अभी उनके पास भी 100 है, हमारे पास भी 100 है, लेकिन ये चीज वापस कैसे ली जाए, तो ये चीज वापस कैसे हमारे ट्रेड में है, तो ये भी जानने के लिए मेरा एक्चुअली क्वेश्चन ये शिवराम जी से कि आप इसको कैसे बता सकते हैं कि हम इसको और आगे कैसे बढ़ाएं रिलेशनशिप को। आप हिंदी में ट्रांसलेट कर लीजिए, मैं हिंदी में भी बोलने के लिए कोशिश करता हूं कि जनरली क्या हो जाता है कि आपको पता, मैं रिटेलर हूं, आप मैन्युफैक्चरर, ठीक है, ऐसी बात करेंगे, राइट? तो आप शायद जाके बताएगा शिवराम जी हमने कुछ, यू मे नॉट यूज माय नेम बट आई एम सेइंग दैट सर हमने आपसे बिजनेस बढ़ाने का, हाँ 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 जरूर जरूर बढ़ाएंगे, राइट? नथिंग गोज बियॉन्ड दैट, राइट? So what you have to go back and say, 2-3 things, at least 2 things that I can first and foremost, somebody else was saying, you have to build a emotional connect with me, right? You tell me, or any of you can tell me, 99% we don't know the retail owner's birthday. Simple cheez hai, right? So you have to start building, saying that शिवराम जी कहाँ रहते हैं, उसका अच्छा पसंद क्या खाना क्या है, some 3-4 little bit of not too personal but some personal relationship, right? So tomorrow when my birthday is happening, and let's assume that I know I like rasgullas, you have to ensure that one dabba of rasgulla goes to me. Utna to ho sakta hai, may not be during COVID time but a little later, right? Now look at my mind, and we are not talking business. मेरा पास कितना वेंडर्स हैं? 100 है। कितना रसगुल्ला डब्बा आया मेरे को? एक। Okay, right? Now if 1 out of 100 vendors reached out to me with 1 rasagulla dabba, next time when Sahil bhai calls up and says Shivram ji kaise hain, kaisa hai danda, at least I'll give you 1 minute extra, not even talking anything else, right? It can be as simple as that, because end of the day even the retailer is a human being. Now I'll put the same argument back to our retailers here. We said, you know, we want to reach out to these 5,000 people, right? आप क्या बताएंगे? सर शिवराम सर कैसे हो? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है. Now at least the fact that the retailer called me, because as a consumer, what have I done? Maybe I buy some sabji, I might maybe buy some grocery, maybe I bought some what do you call, consumer durable, maybe I bought a fridge, maybe I bought a mobile phone, maybe I just saw somebody on Facebook, नया गाड़ी आया घर के लिए. Except the automobile industry, nobody calls us back. Correct? After you made a purchase, has your refrigerator fellow called you? No. Has your specs fellow called you? No. Right? Nobody bothers me. Right? My grocer calls me? No. Will Flipkart call me? No. Right? My sabji wala kharidega, phone karega kya, sir, happy birthday? No. Right? Now what does it cost you to wish me on my birthday? आज तो automation भी हो सकता है. So next time if I want to buy something, right, the chances are, like I said, if you do advertisement on Facebook and Instagram, etc., I keep seeing your advertisement as a retailer. Then once in 6 months you are catching me and say, good morning sir, happy birthday to you. In 6 months time you will say happy anniversary to you. Somewhere next time I have a 50,000 rupee to be spent. If I've decided to buy mobile phone, you can't do anything. But if I decide to buy some jewelry, any consumer has got at least 3 options in the market today. आप है, आपका बाजू वाला retailer है, और इस तरह वाला corporate या local retailer. Between the 3, I could have gone to anybody else. At least I will come into your showroom to check your stock. खरीदना नहीं खरीदना वो अलग ही बात है, but at least I will come into your showroom. इतना कर सकते हैं हम लोग. And none of it costs you lakhs of rupees. And for a wholesaler like you people, 100 retailers hai aapke paas. Right? It is not 10,000 retailers. Right? Now you go back after 1 month or 2 months and saying that, okay, sir, kaise chal raha hai? You know what? How can we work together? Then I'm in a little better mood
to talk to you compared to your own competitor. Somebody says, sir, Shivram sir, हमारे को आपसे ज़्यादा करने का है धंधा. But that fellow, what is the answer from Shivram sir? हाँ करेंगे जरूर जरूर. Whereas with Sahil bhai, हाँ जी साहिल भाई कैसे हो? फर्क होगा? And what did it cost you? One Rasagulla dabba. So that's as simple as that. वेरी वेल सेड. बहुत अच्छा आंसर मिला. मतलब इनफैक्ट मेरे को क्वेश्चन तो समझ में बहुत अच्छा आया था, बट आंसर ज्यादा अच्छा समझ आया. मैं खुद सोच नहीं पा रहा था आंसर ये होगा. एंड सेकंड थिंग, अभी जैसे हम लोग बार बार ऑनलाइन सेल्स हम बात कर रहे हैं रिटेल के लिए भी. फॉर एग्जांपल अभी ऑनलाइन सिर्फ रिटेल भी नहीं रह जाएगा, शायद होलसेल भी ऑनलाइन ही आ जाएगा एज द टाइम प्रोग्रेसेस. नाउ आई रियली डोंट अंडरस्टैंड, लाइक एवरीवन इज रियली ट्राइंग फॉर इट, बट कहाँ पे हम लोग का हिच है, या हम लोग की कहीं पे एफर्ट कम है कि हम लोग ऑनलाइन में नहीं चल रहे, कि कंज्यूमर भी ऑनलाइन ज्वेलरी नहीं खरीदना चाहता. व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? मतलब ऑनलाइन के हिसाब से व्हाट इज योर टेक ऑन दैट कि भाई इतना क्यों नहीं ग्रो हो रहा है ज्वेलरी में पर्टिकुलरली? See, don't get me wrong, okay? And I must advance apologize to all of us because I'm also part of the industry. I think we have not made adequate enough effort. Okay. The challenge today is that it is an expensive item. Correct? Right? Whether you're a wholesaler, whether you're a retailer, I'm a consumer, it's still end of the day an expensive item. Maybe as a wholesaler sending me a WhatsApp, I don't have the touch and the feel. If I am a small town person, शायद हमने आपको WhatsApp में मैसेज दे देते हैं. लेकिन if I am a slightly larger retailer in a bigger town, my expectation is that my salesman from the vendor side will come and meet me. वो तो है. I want the salesman to come and meet me, right? But the crux of the problem is I also don't know what I want. The salesman who's coming to meet me is also not familiar with what I want. So I'm generally saying, हाँ ये सब माल लेके आओ, नया लेके आओ. The favorite phrase of all retailers is what? नया लेके आओ. If I ask you the second question, sir, आपको नया क्या चाहिए? There is no answer. There is no answer. So somewhere you have to, then it goes back to what I just now said. If you build that relationship, I'll say, नहीं भैया देखो हमको कुछ necklaces है, हमको 2-3 लाख रुपए का माल चाहिए. Then you are in a better position to, kind of satisfy customer requirements or client requirements. एक और इसी में ऑनलाइन में मुझे क्वेश्चन ये था कि जैसे समटाइम वी फील कि जैसे आपने बोला ना ऑनलाइन इज एक्सपेंसिव, बट No, online is not expensive. Online is the cheapest if you ask. No. I mean, is otherwise, मतलब it's the cheapest way of doing business. I agree. But मुझे क्वेश्चन ये था, कई बार हम देखते हैं यार Amazon इतना आगे, मतलब it's 24/7 in front of your eyes. Whether you look at your Netflix, whether you look at your email, everywhere पहले Amazon दिखेगा. They are on GJC website today. If you go back. Yes. So they are not leaving everything, and we are also having a session with them. That's great. बट कई बार ऐसा लगता है कि हम ऑनलाइन के कंपटीशन में हम स्पेंड तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं हम स्पेंड गलत जगह करें कि हमारा मतलब इनसे कॉम्पीट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये भी प्रश्न आता है. तो हाउ डू वी ओवरकम दैट? नहीं, you should look at it saying that whether it's Amazon, Flipkart, whoever it is, they are one more distribution channel. We should never look at it as a wholesaler, right? Are you looking at retailers as competition? No. Right? You want the retailer to sell to the end consumer, right? So Amazon is another, happens to be on the internet. So once you look at that, right? If Amazon is able to reach out to me 24 hours a day, right? And if he's able to talk about a category which I'm currently not exposed to, right? And if I can get one out of, how many products are there on Amazon? Can anybody make a guess on how many products are there on Amazon? Wild guess. Some wild guess. 1 million at least. Last I remember, it is 6 crores. Yeah. 6 crore items are sitting in their backend. And today they are talking about 80% of that will come in one-day delivery. So, you have to take the advantage of that, right? And and I'm just raising this point, right? If just example, if GJC can get together, create an equivalent platform, maybe it is going to take some time and effort. Maybe every retailer may not be able to, build that kind of a robust platform. But if maybe we'll all get together, right? And we build on it and we talk about it. See, खाली आपने एक website बना दिए तो वो customer नहीं आएगा. There's a very nice proverb that says,
Even the best mouse trap will not catch the mice unless there is some good food inside it, right? So we have to market it, right? And for me, like I said that time, you are suddenly overnight an all India brand. Abhi kitna hai hamara reach? 5 kilometers. Correct? Now, if I can sit in, like this internet, right? You're all sitting in all over the country, and what is the convenience? घर में बैठ के, yesterday I was talking to somebody, आपका lounge chair में बैठ के सुन सकते हैं, right? Same way, if you can sell to somebody in Kashmir to Kanyakumari, why not? So that's the answer. Great. Anyone who's having a similar query or who wants to add on further to it, please feel free, and you can raise your hand, and then Ninath can let you in. Yeah. So it says Kandelwalji is saying Amazon has launched its own range of silver products long before they'll sell gold once they get enough data. Yeah, it's a distribution channel. They'll sell everything. 6 crore products hai, to 1 or 2 add 6 crore and 10. Okay. Oh yeah, 6 crore and 10. Okay. Anybody having any question, or should we move to the another question? We are based in somebody there. Dushyant Golcha. We are based in a very small town. Every retailer is increasing credit lines and lowering the rates and fluctuating gold rates. This is quite cumbersome to manage. Even sometimes customers and so on. This is getting bad and getting difficult to get out of this. Dushyant ji, the answer is very simple, right? I'm assuming that you want to continue in the business. Yes, I want to continue. Otherwise, this question will not come. Next question really is, you can type the answers. Small town kitna ho sakta hai? 1 lakh log. Okay. 1 lakh is probably small town in India. 50,000 is small town in India. In that 50,000, how many people are coming to your shop? 10 per day. Right now 10 per day से आपको कितना चाहिए? Sir, हमको 13-14 हो गए तो मेरा कहानी खत्म. Okay. Now if I want 3 more people, I go back to what I just told Sahil bhai. Out of these 10 people, how many people do you have a relationship? आपको कितने लोगों के साथ आपके पास relationship? मेरा एक customer feedback testimonial, client testimonial था, वो बहुत अच्छा लिखा है. Earlier, we used to come in the morning, close in the evening, and we wouldn't even say hello to my consumers. Right? Forget about knowing her name. Forget about knowing her birthday. You wouldn't even say good morning, good afternoon, good evening. आपको क्या चाहिए? हाँ जी, हमको ये चाहिए. हाँ जी, ये 10 pieces है. आपको ये chain चाहिए तो लेके जाओ. You are not collecting her name. You are not collecting her phone number. Right? Then how will you reach out and build a relationship? Start building a relationship. The 10 may not become 15, will at least become 11, because you are reaching out to the customer as a human being, not as one rupee value. Start with that. I hope you've got your answer. Okay, now one more interesting thing that we came up from your topic was like, you had said like, there were credit purchases and उसमें क्या होता था, retailer वो माल खरीद रहा है जो उसको चाहिए नहीं, और बाद में advertisement के लिए उसके पास revenue कम हो रहा है और golden chair में सारा माल पड़ा रहता जा रहा है. So अभी ये the strategy is such कि wholesaler को क्या इसमें devise करना चाहिए और retailer को क्या सोचना चाहिए. Retailer की सोच तो आपने हमको बताई कि ठीक है, he should not overdo. But जैसे wholesale भी, जैसे अभी ये इन्होंने दुष्यंत जी ने I'll give you a very nice story, and I keep telling you this. Once upon a time, there was the Hindustan. I'll just use Hindustan Lever as an example. The Hindustan Lever chairman was going and visiting one small grocery shop. So when you say Hindustan Lever का chairman आएगा बोले तो उसके पीछे एक army रहता है. So national sales manager, regional sales manager, district manager, territory area executive, van salesman, सब लोग थे, 15-20 लोग. Because the big man has come, even the retailer is under pressure to say, मैं तो hero. Correct? So he said, give me 2 dozen toothpaste and 3 dozen this. बहुत बड़ा order बना दिया. When this all purchase was happening, Hindustan Lever का competitor, let's say Procter & Gamble, Tide वाला, right? That van salesman came. उसको नहीं मालूम था कि ये बाजू वाला आदमी खड़ा हुआ है, वो HUL का chairman. Correct? So you know what he told? He said, अरे भाई grocer, retailer,
ये मेरे से एक ट्यूब खरीद लो, तो आपको मैं रोज रोज आता हूं, तो कल सेल नहीं हुआ तो मेरे से मत खरीदो, परसों सेल हो गया तो मैं दोबारा आपको एक नया एक टूथपेस्ट या एक डजन टूथपेस्ट का डब्बा दे देता हूं. Now if you go back from a retailer point of view, where would I buy more products from? Procter and Gamble. सीधी बात है, क्योंकि मेरे को 2 डजन खरीदने का जरूरत नहीं, 1 डजन खरीद लिए तो या 2 पीस खरीद लिए तो बस. So now go back to the question that you asked. You identify a set of products which, as a retailer, I am able to deliver frequently. Then I am not blocking. You don't have to give me credit. You don't have to worry about my credit worthiness. You don't have to worry whether I sleep or don't sleep, because you are not losing your sleep on me. Okay, that's sufficient, no? See, the reason why I am so keep on repeating this is that we are supposed to be 3 lakh crore industry, 3, 4, 5, whatever it is. I'm using 3 rotations, which is 1 lakh crore. 1 lakh crore mein 30% is dead inventory. Everybody is talking, which is 30,000. So 30,000 crores is a lot of money for all of us. So if we can release that money, we have money to do everything else. Customer relationship कर सकता है, marketing कर सकता है, advertising कर सकता है, staff को अच्छा pay कर सकते हैं, सब कर सकते हैं. Good one, very well said. And one more question जो बार बार आ रहा है कि how to handle the undercutting, like जो कई लोग जो जैसे whether it's online whether offline जो काफी competitive रह गया, profit margins जो एक समझो रिटेल के 12-17% होते थे वो भी श्रिंक होके 5 to 9 के बीच में आ गए हैं, एंड होलसेल में भी प्रॉफिट मार्जिन्स अप्रोक्सीमेटली मतलब हाफ से 1% ही रह गया, मतलब इतना ज्यादा कंपटीशन हो गया. तो हाउ टू हैंडल सच काइंड ऑफ अ कंपटीशन? व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? See, there is no simple answer, right? But the point I would like to look at it is, there is no free lunch. Correct? Okay, right? Having said that, is this so-called competition which they are selling on landing price, etc., are they selling at a loss? Is anybody selling at a loss? Probably not. Probably not, right? So which means either he's selling it at break even or he's selling at a smaller margin than yours. Correct? Smaller margin than yours. He's definitely, in fact, आपने मार्केटिंग के अंदर गए तो देयर इज समथिंग कॉल्ड अ कॉन्सेप्ट ऑफ अ लॉस लीडर, पर्पसली लॉस लीडर. ओके, मेरा घर के पास एक सब्जी वाला है, वो 2 रुपये पर किलो टोमेटो बेचता है. लॉस है वो, बट इसे सर आपने 2 रुपये का टोमेटो खरीदने के लिए आके 200 रुपये का सब्जी खरीद के जाते हो. दैट इज वेयर ही इज मेकिंग हिज मनी. सो लेट्स लीव द लॉस लीडर कॉन्सेप्ट. देन आई गो बैक एंड से इफ यू आर सेलिंग इट एट अ लोअर मार्जिन, then I have 2 choices. Either I have to lower my margin, or I should say, and this is a nice example between Jio and Airtel, right? Jio is cheaper than Airtel, right? But what is Jio doing and what is Airtel doing? Jio is focused on volume. Unka itna capacity hai that they are building volume. What is Airtel saying? Airtel is saying, listen, we won't be able to compete with this volume game. We are going to give you great service. And in the last 8 quarters, they are adding new customers, right? So you have to decide saying that, no, I'm not going to fight this pricing competition, but shayad mera customer service acha hoga, mera quality of products acha hoga, mera designs acha hoga. The best example will be slightly, like a boutique store in a small town. He gets only 3 customers, but the 3 customers are willing to pay a better price. But he is not a commodity where I am selling, like he says, selling it at landing. So you have to decide your position. Your position is, I am a high quality, good, great on design, but my making charges are higher, or I am like selling gold coins. That's another option. Wonderful answers, wonderful, really satisfied. Anybody? देखिए इस बार क्या हुआ शिवराम जी, जो 100 का स्कोर था ना मेंटेन रहा, जो कन्वर्जन रेट फुल 100%. पहले हम 2 डबल सेंचुरी तक गए थे, फिर जो सीरियस कस्टमर्स है वो सब रुके पीछे हर चीज सुनने के लिए. Then they should ask questions. Yeah, that is why I am encouraging them. भाई आप कुछ भी पूछिए. You can ask them to speak in Hindi also. आप हिंदी में पूछिए, शिवराम जी को हिंदी भी बहुत अच्छी समझ आती है. हाँ, बोलेंगे वो हिंदी और इंग्लिश या जो भी उनको कंफर्टेबल रहेगा. You can translate.
Yeah. Anyone can really, raise their hand. आशीष जी अगर आप हैं, हाँ चलो भोला आशीष जी, क्वेश्चन आ रहा भोला है। जी कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ जी, डॉक्टर राजेंद्र भोला जी। राइट 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 राइट। Balaji, namaskar. Namaskar, Shivram ji and Mehra ji. You are conducting a excellent interactive session, and it's very thought-provoking. Particularly, in all given times, we need to keep questioning ourselves that how we are doing, what we are doing, how we can make it better. Because unless we change our mind, we cannot change our results. So that's really very nice. And Mehraji has been really pointing the right questions which every jeweler has today, because most of them are facing the challenge with this digital revolution, with the COVID situation and lockdowns. And the third is the open market competitions we are facing. And sometimes it is very difficult to reconcile on what you said right now, that how to reduce your margin or how to be a loss leader. So this has never ever happened in our industry. So, but now I think it's a new reality, and we need to do that. There's no other option. Sometimes we keep waiting that maybe tomorrow we'll find an option. So, Shivramji, I would request you to please emphasize on this point a little more, elaborate on this point more, that how our responses are generally delayed on understanding. See the, that's why I very consciously put that comment. The comment was wealth versus cash flow. Okay, right? It is not about being wealthy, right? बोला जी हमारा आवाज आ रहा है? साहिल भाई आ रहा है आवाज? Because yeah, very much. Shivram ji, right? Maybe he put it on mute. It is not about wealth, right? It is about business cash flow, right? Many a times, as business people, we are just looking at the business as an extension of my family, right? हमको पैसा चाहिए, so you take some money from the system, because end of the day I am the boss, right? You take some money out of the system and put it into real estate. You take some money out of this system and buy something else, or you have something else, you come and put that inventory back into the put that money back into the inventory, right? Nowadays I tell people that the investor is your family, right? If the investor is the family has has appointed you, these 100 and odd people here, as I will use the word manager, right? The family has invested money and also sending you to run the business, right? आप है, आपके लिए आपने घर छोड़ के दुकान पे बैठ के धंधा करने के लिए भेजा है. आप अलग घर में शायद आप फादर हो, ग्रैंडफादर हो, वो अलग ही बात. Now the family is asking you that आपने इतना मेहनत करने के लिए दुकान जाते हो, what is the return on that investment, right? Now once upon a time maybe you had 20%, 25% margin, but वो जमाना चला गया, वो pre-COVID का life था, right? Today the life is different. That's why I say you have to go back and put a new business plan. And I'm not even talking about 1 year business plan. This challenge is 10 days. But if you ask me personally, you should look at it as a 1 year profile, right? 1 year में मैं इतना, the first slide, sales is vanity, profit is reality, cash flow is whatever that number is, right? Cash flow is the reality. If you go back and say मेरे को इतना cash flow चाहिए या इतना cash profit चाहिए, then your life will change. Then you go back and say, no, market is down, I'm going to only do 50% or 5 kilos. From this 5 kilos, I want to do this, right? Then you will start readjusting your, whether I need 100 kilos, can I manage with 50 kilos? Do I need 3-storied building? Can I manage? Nobody, multiple times I have seen this.
Lot of retailers tell me, sir, log kya kahenge? Right? My suggestion is nobody cares. It's your money. Nobody is giving you free money. Right? So you have to see whether I'm making that cash profit which I have committed to my family. And the challenge, unfortunately, is, and sometimes sorry to push my case here, the family will never question you. Right? And you need a third person to come and say, sir, aap kya kar rahe ho? Why are you simply having 3 stores? Why are you simply having 100 kilos when only 30 kilos is sufficient for you? That's a tough question which nobody in your family circle is able to ask that question. And anyway, you are the boss. So if you start thinking on these lines, saying that nahi, humko 100 nahi chahiye, humko 60 kgs is sufficient, right? From that 60 kgs, I want to really make, say, whatever 5 kilos or 10 kilos worth of. Nahi, itna mehnat kyun kar rahe hum? That's the point I keep repeatedly asking everybody. Bola sir, I hope I answered your question. Yes, please. I got disconnected because the connection dropped. So basically what I said was that you look at it as a family, which is the investor, and you as the business manager in the shop. And then from that business manager, the family is asking you, you are going full-time morning till night. We have invested 100 kg in the shop. What is the return you're giving? You may be the owner in the family, that I'm not interested. But I, as the owner, I'm asking the manager who is running, which is you, saying that why are you spending so much time? Otherwise, be staying at home, right? Because you're spending time, but you're not getting the returns. And then you readjust. We all have to readjust. We are not readjusting. That is my fundamental, complaint, if I can use that. वो ज़माना चला गया. Pre-COVID, घर में बैठ के, दुकान में बैठ के customer आते थे. वो ज़माना चला गया. Now you want customer. It's still okay, nothing wrong. Saying that नहीं कितना चलेगा क्योंकि मेरे को खाना पीने का problem नहीं. There is no problem there. But if you're sitting here with listening to crisis management, then you are interested in growing your business. If you are interested in growing in your business, then you should have a target. If you have a target, then you should achieve. Everything is step by step. इतना है तो इतना पसीना आने तक मेहनत क्यों करने का है? Right? 2 o'clock is the night time to sleep. But we all want to, and I'll give you one more very nice example. My guru, business guru, told me, you want an easy life? I said, yes, I want an easy life. He says, take a gun or a hammer and hit it on your head. If you hit it on your head, your head will get hurt. They'll take you to a hospital, put food in your mouth. That is easy life. And you want that kind of an easy life? Honestly, wealth is there. Khana, pina, sona problem nahi. Sona is little difficult these days, but khana pina ka problem nahi. But if you are not in that space, saying that I want to achieve something, and I was telling my dad yesterday, and I give you a very nice example. I hope you know Paras Pharmaceuticals, Moo and all that. That man, Darshal Patel, I think, if I remember the name, he sold Paras Pharmaceuticals for 2,400 crores or something. And for 4 or 5 months, he was generally sitting at home. Kuch nahi kar raha tha. 2,400, I think for all of us, is a lot of money. No need to work. But he said after 4 or 5 months, one of my senior employees came and told me, sir, आपका उम्र 45 years है, आप ऐसा खाली नहीं बैठने का. Right? You are not supposed to sit idle. Then he said, I took it seriously, and that is how वो आपका fog है ना, fog perfume, deodorant, वो शुरू हुआ. He started fog after that comment. अभी उसको भी fog को भी बेच रहा है 3,000-4,000 crore. Right? So we are not here for easy life. We are here to prove something. All of us, if you really look at it, comfortable. There is no problem. Except somebody saying that, you know what, sir, I got competition. The direct answer is if you cannot manage, close the shop. Right? You are here to fight. All of us are fighting. Right? Competition will be there. Customer will be finicky. I'm an extremely finicky customer. But having said that, you have to deliver value. If you don't deliver value, somebody else will come. Right? So that's really the message. Otherwise santusht rahenge hum. Good one, very good one.
शिवराम जी, और बोला जी आपका क्वेश्चन बहुत थॉट प्रोवोकिंग था। इनफैक्ट आपके क्वेश्चन पे आपका कनेक्शन ड्रॉप हुआ, लेकिन उसमें भी उन्होंने जो बताया काफी रेलेवेंट था, काफी अच्छा था। वेरी गुड। एनीबडी एल्स? Now the best part is Shivraman has the real hold on the pulse of the industry. Yes. You have lot many people who can give you a whole lot of wisdom, but the issue is that his experience to the industry and his very pragmatic approach towards everything is very good. I think all of us, we can benefit from his advice and his Please, consultation. happy to do that. Yeah. मिस्टर वीके ने हाथ रेज किया है। मिस्टर वीके वो शायद कुछ बोलना चाहते हैं। साहिल भाई, वीके। निनाद भाई आप देखिए। हाँ हेलो सर। क्या बोलिए। हेलो सर, मैं हिंदी में बोल सकता हूँ क्या? हाँ बोलिए। हाँ जी, यस जरूर बोल सकते हैं। अच्छा, मैं कुछ एक क्वेश्चन करता हूँ यूथ की तरफ से। हेलो, बोलिए, आवाज आ रही है आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, तो मैं ये बोलना, हाँ, तो हमारे पास कुछ यूथ कस्टमर्स हैं। हेलो, यूथ कस्टमर्स। अरे बोलिए ना। हाँ, तो उनका ये कहना है कि अच्छा ये गोल्ड का उपयोग क्या है, ये थोड़ा सा हमको बताएंगे? हेलो, I didn't get the question. What was that? शिवराम जी वो ये बता रहे कि उनके जो यंग कस्टमर्स जो उनके पास आते हैं वो कहते हैं हम गोल्ड ज्वेलरी क्यों खरीदें, गोल्ड का एज अ एसेट हमारे लिए क्या उपयोग है। दिस इज आई थिंक सो उनके क्वेश्चन का मतलब ये था। You see, the answer to that is I am not trying to convince a customer. I mean, सीधा बात, right? सीधी बात. I am not trying to sit and convince a customer who is not convinced about gold. Okay. The Indian jewelry market is 3 lakh crores. उसके अंदर मेरे को 30 crore हो गए तो बहुत हो गया मेरा काम. Right? So I'm not going to waste even 1 second on that lady who says, listen, should I buy gold? I can give you some 25 explanations. आपको मालूम है, right? नहीं मैडम इसका भाव बढ़ सकता है, ये asset value है, ये fashionable है, right? आपको अच्छा डिजाइन्स मिलेगा। नहीं ये सब नहीं चाहिए मेरे को। फैशन स्ट्रीट से मैं माल खरीद सकता हूँ 200 रुपये में। तो मैडम फैशन स्ट्रीट से फैशन ज्वेलरी खरीदने का एक्सपीरियंस ही अलग है, आपने डायमंड ज्वेलरी या गोल्ड ज्वेलरी पहनने का एक्सपीरियंस ही अलग है। नो आई एम नॉट कन्विंस्ड। ओके मैडम, देन इट्स अप टू यू। क्योंकि मेरे को आपको इतना क्या बोलते हैं सर्कस करके इतना कन्विंस करने का जरूरत नहीं है, राइट? But what I can still do, right, is मैं NK VK से पूछ सकता हूँ क्या आपका कैरेटेज कौन सा है, right? शायद आपने 22 कैरेट बेच रहे हो या 18 कैरेट बेच रहे हो, right? Maybe there is an opportunity in 14 carat. I know in North India 14 carat is reasonably well accepted. Maybe 9 carat is okay, right? So you can think along those lines, right? आप वो भी सोच सकते हैं कि 9 कैरेट ज्वेलरी बना के दे सकते हैं आप। नहीं, मैं 22 कैरेट गोल्ड बेचता हूँ। हेलो, करेक्ट मैं वही बोल रहा हूँ कि आपका आवाज आ रही है ना? आपका 22 कैरेट का भाव वो कस्टमर को महंगा पड़ रहा है, तो इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि आपने 9 कैरेट ट्राई कर लीजिए। सो इट कुड बी समथिंग एल्स, राइट? नहीं, मैं मेरे सिंपल क्वेश्चन है। हेलो, बोलिए। वीके जी मैं बता रहा हूँ शिवराम जी जो आंसर किया। सिंपल क्वेश्चन है यूथ का कि मैं 5 लाख रुपए का गोल्ड ज्वेलरी खरीदूंगा तो इसका उपयोग क्या है? मैं वही बता रहा हूँ वीके जी। शिवराम जी ने बताया कि जिस तरह हमारे इधर ये इंडस्ट्री 30 लाख करोड़ 5 लाख रुपए में उसके पास तो 4 व्हीलर भी आ सकता है ना। हाँ, तो वही उन्होंने बताया कि मैं वो यहाँ यूज की बात कर रहा हूँ। उपयोग क्या है उन्होंने आंसर क्या दिया। उन्होंने यही बोला है, यहाँ तो आप अपनी चीज को एडवर्टाइज करिए, आप उसमें इमोशन डालिए तो उसको गोल्ड खरीदने का या तो मन होगा, या आपका एवेन्यू खाली एक पर्टिकुलर मतलब यूथ भी अगर आप देखेंगे ना, आप रिसेंटली चेन स्टोर्स के ऐड देखेंगे तो उन्होंने वेडिंग को बहुत ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया है, मतलब एक यूथ का जनरेट करने के लिए डिमांड। तो वो सब चीजें शायद काफी आगे रेलेवेंट हो सकती हैं, बस इनका ऐसा मानना है। इन्होंने ऐसा एक्सप्लेनेशन दिया और उन्होंने कहा इंडस्ट्री फिलहाल अभी इतनी वास्ट है कि हम ऐसा भी नहीं सोच सकते कि ज्वेलरी खरीदने वाले कस्टमर्स काफी कम हो गए। ऐसा सीन डेवलप नहीं हुआ है। तो एडवर्टाइजमेंट इज अ गुड ऑप्शन
और आप उसको कन्विंस, जिसको होना ही नहीं है कि ज्वेलरी लेना है ही नहीं लेना, उसको आप पीछे पढ़ के कन्विंस कर नहीं सकते आप किसी को। आई होप। हाँ, मैं उसको कन्विंस क्यों करूं? हाँ जी, ये कन्विंस करने वाला आइटम तो है नहीं। हेलो, बस बस बस, एब्सोल्युटली आप सही बोल रहे हैं, हेलो, एकदम सही बोल रहे आंसर है ना। हैं। अच्छा, गोल्ड की ज्वेलरी खरीदने के लिए आप किसको कन्विंस कर सकते हैं? क्या आप 100-200 रुपए के लिए कन्विंस कर सकते हो, लेकिन 4-5 लाख रुपए के लिए आप किसी को कन्विंस नहीं कर सकते, सही है, सही है, सही। है ना? तो अच्छा, तो फाइनली क्वेश्चन यही राइज होता है यूथ के लिए कि भाई मैं तो 5 लाख रुपए की कार में घूमूंगा तो वो तो उपयोग में है, बट गोल्ड ज्वेलरी का क्या उपयोग है? सिंपल क्वेश्चन। सर जी, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। अभी तो आप गोल्ड ज्वेलरी को गोल्ड लोन भी ले सकते हैं सामने, अगर उसको 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 अपनी ज्वेलरी को वैल्यूएशन देना है। खैर, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन सर, सर इसी से एक जुड़ा क्वेश्चन है, अभी मेरा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। बोलिए, जल्दी बोलिए। अच्छा, हाँ, तो इसको मैं ये समझाता हूँ कि गोल्ड ज्वेलरी से आपका जो वेल्थ मैनेजमेंट है हाउस का, वो बहुत अच्छा रहेगा। ये मैं नहीं बोलता हूँ, ये पहले से होता आया है। हेलो, क्या मैं समझ, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो, आवाज आ रही है। हाँ, तो मैं उनको कन्विंस कर लेता हूँ, बट यहाँ पर जब प्रॉब्लम ये आती है कि भाई इसको 5 लाख रुपए की गोल्ड ज्वेलरी खरीदना, इन्वेस्ट करेगा, तैयार हो जाता है, तो उसके पास 1 लाख रुपए, तो मैं 4 लाख रुपए उसको किधर से फाइनेंस करके दूं? मैं तो उधार दे देता हूँ, चलो 40-50 हजार रुपए उधार दे दिया, बट जहां तक ज्यादा वैल्यू की बात आती तो इसका एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। ये प्लेटफॉर्म किधर से मिलेगा कि उसको गोल्ड ज्वेलरी फाइनेंस हो जाए और वो गोल्ड ज्वेलरी भी उसी के पास रहे। हेलो, जैसे कार वाले करते हैं ना, जैसे अगर तो वीके जी, उसमें काफी कुछ साहिल भाई, हाँ जी, सुनिए। हेलो, साहिल भाई, मैं कुछ बोलूं? हाँ, आशीष जी हाँ बोलिए। विके जी, इसमें 2 उपाय है। एक तो जो छोटी वाली बैंक्स होती है, कोऑपरेटिव बैंक्स और ये बैंक्स, वो सोना खरीदने के लिए लोन देती है, वो उनके कस्टमर्स को ये फैसिलिटी अवेलेबल होती है। दूसरा बात, जैसे अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड पे EMI फैसिलिटी अवेलेबल पहले होती थी, जो रिजर्व बैंक ने 18 कैरेट के ऊपर का EMI फैसिलिटी बंद करवा दिया है। तो फ्रॉम GJC हमने है कि अभी हमारे देश का बैलेंस ऑफ पेमेंट सुधर गया है, तो प्लीज हमें 18 कैरेट के ऊपर, जैसे 22 कैरेट है या 23 कैरेट है, वो ज्वेलरी को EMI फैसिलिटी अवेलेबल करवा दे, ताकि लोग आज ज्वेलरी खरीद के 6-8 महीने में उसका पेमेंट कर सकेंगे। तो इस पे हमारे प्रयास जारी है, होपफुली 2-4 महीने में इस पे रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा, ये तो प्रयास जारी है। पहले होता था क्या? पहले होता था, 3-4 साल से बंद हो गया। अच्छा, तो इसमें हमको क्या प्रयास का, चलिए आपका प्रयास सफल होता है इसकी तो मैं शुभकामनाएं देता हूँ आपको कि आपका प्रयास सफल हो, और मैं इसको अगर प्रयास सफल होता है तो मुझे कुछ जानकारी भी मिल ही जाएगी, मैं पता कर लूंगा। आप GJC के मेंबर हैं तो आपको न्यूज़लेटर के थ्रू सबको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। अच्छा जी, ये तो बहुत अच्छी खुशी की बात है। अच्छा, आप थैंक यू। ओके जी, थैंक यू जी। GJC का मेंबर है क्या? हाँ जी, हाँ, तो फिर आपको जानकारी मिलेगी। संजय जी, ओवर टू यू। अभी आप यहाँ से टेक ओवर करिए एंड वोट ऑफ थैंक्स देख लीजिए। नहीं साहिल भाई, शिवराम जी, बहुत ही अच्छा सेशन रहा, बहुत ही इंटरेक्टिव रहा, जबरदस्त था, जबरदस्त। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ शिवराम जी, सच इंटरेक्टिव सेशन के लिए। और हमारी जो GJC की जो ऑर्गेनाइजिंग टीम है और हमारे जो स्टाफ है, मैनेजमेंट है, उनको मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और जो हमारे पार्टनर्स हैं, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल हैं, जो हमारे कमोडिटी एक्सचेंज पार्टनर है, MCX हैं, टाइटल पार्टनर वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल है, उनको भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ, उनका इतना सपोर्ट है हमको। हमारे चेयरमैन सर का बहुत ही अच्छा आज स्पीच भी रहा, और उन्होंने बहुत अच्छा, बीच में भी काफी एक्टिव थे वो सर। और हमेशा हमारे चेयरमैन सर का लाभम के लिए तो हमेशा ही एक अलग ही झुकाव रहता है, माने वो हम लोग शब्दों में उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। तो इंटेलेक्चुअल चेयरमैन है वो, इंटेलेक्चुअल चेयरमैन है, शिवराम जी सही बोला आपने। थैंक यू सर, इसलिए मैं उनको स्पेशल थैंक्स देना चाहता हूँ। थैंक यू। इट इज ऑलवेज अ प्लेजर टू लिसन टू यू शिवराम जी, यू नो दैट। एंड मैं हर बार यही कहता हूँ, शिवराम जी का कोई भी सेशन हो, जाने के बाद मिनिमम 1 से 2 नई थॉट लेके हम लोग बाहर निकलते हैं। दैट इज हिज ब्यूटी। थैंक यू सो मच। यस। तो मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहता हूँ मेरे पार्टिसिपेंट्स को, हमारे जिन्होंने आज इसको पार्टिसिपेट किया और इन्होंने एक अच्छा इसका इंटरेस्टिंग सेशन बनाया इसको।
और आगे भी हम लोग इस तरह से करते रहेंगे। और इस तरीके से मैं इसको आज की मीटिंग को मैं एंड करता हूँ और ये वोट ऑफ थैंक्स देके। Sanjay bhai, just one question. You ask them if there's any specific topic that it needs to be covered. हाँ, अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक है कोई जो भी कवर होना चाहिए तो हमारा ईमेल आईडी है labam@ggc.co.in, तो उस पर आप हमको भेज दीजिए, तो हम लोग उसको कवर कर लेंगे और आगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में उसके ऊपर हम लोग उसके साथ में आएंगे। ओके सर, थैंक यू सो मच। आज के मीटिंग में Sanjay bhai, Ashish bhai, Sanjay bhai, everybody, Nina, thank you so much. Thank you very much. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। Thank you. Bye. थैंक यू सो मच सर।